Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have in the podcast with me Izzah Shaheen Malik, who is more popularly known as Pictro Izzah. She runs a very successful photography business out of Pakistan. And in fact, she's been doing this for several years. She's been on the podcast before as well, but she has grown and changed so much since then. I thought it only made sense to have her and hear her thoughts now. So we're talking about the recent successes she's seen in her business, how she's become an international photographer, taking photos all over the region now, destination weddings, international clients. We're also talking about the content industry, about the online culture, and we're also talking about a few personal things. Izzah wanted to talk about her mother's passing and how that kind of changed her perception about the world, how she's changed from the inside, how going through this grief and this change has affected her. We're also talking a bit about spirituality and intuition. So this podcast is of a lot of varied topics, but it's definitely interesting, so stay tuned. Here's Izzah. Hi Izzah. Hello. How are you? I'm well. How are you? I'm good. Thank you so much for coming, taking out the time, doing this with me for the second time. Yeah. I know it's aasan nahi hota. I know. But so I really appreciate that you came down here again. So first I want to ask you, okay, what are you doing here in Dubai? I'm here to set up my company. Now that I'm done, yeah, I was here to set up my company. I'm leaving soon. So, yeah. And why did you decide to set up your company here? Okay, so I have a lot of destination wedding clients, and normally, like whenever they, try to send money to Pakistan, it's never like an easy option because sometimes bank they just don't approve international transactions like that. Secondly, we have a lot of clients from Dubai. Plus, I also feel like if you're expanding anywhere and you're shooting more than like 14 to 15 weddings a year, you should always make it legal. Like it's illegal if you work on a tourist visa. Oh, okay. Yeah, it's illegal like anywhere in the world. Okay. So I always prefer to legalize things as soon as I can. I know it took me a long time, but it was like on my top priority. Yeah, like you want to go through the system properly for everything that you do. Exactly. Yeah. So you just said, you do a lot of destination weddings. So I know that the past year and past couple of years have been really, pretty awesome for Pictro Izzah because, you suddenly had this, you suddenly became an international photographer. And I also know that you covered weddings in Europe, which was like a dream for you. Yeah. Right? So how do you feel about this sudden, scale of your business, and how did you sort of manage it? Was it overwhelming? I'm sure it was exciting, but behind the scenes things are very different. I mean, obviously, so लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा black and white में सोचते हैं, right? कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसमें feelings सिर्फ अच्छी होती हैं, but it's never that simple, right? It's always grey, it's very complicated. So can you tell me a bit about this journey of scale? So I started very young. I had a long like I think I had a good bunch of like 2-3 years just I established my business in Pakistan, and I always believed in teamwork. I remember when I spoke to you like 2.5 years ago, I did tell you that मेरी team बहुत चीज़ें manage करती है मेरे साथ. So the whole process and the entire point of running Pictro Izzah in Pakistan was कि eventually सारा कुछ ऑटो पे आ जाए. I am still very finicky कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें माइक्रो मैनेज कर रही होती हूँ, but मेरी ज़रूरत नहीं होती. That's just me being me. Yeah. But once I realized that they are managing things very well in Pakistan, and now I can focus on the international side, that was the point when we finally like decided to do like, starting from one wedding in a year to like 18 weddings in 1 month, and then like 30 weddings in a year. So it was quite a task because उनके visas के problems थे. I slowly developed. सबसे बड़ा मसला ये होता है, you know that how Pakistani passport is. ठीक है, मतलब सबसे बड़ा problem हम ना visas वाली चीज़ थी. I had to like make a history, but वो history भी कैसे बनती जब visas लगते, visa लगेंगे नहीं पाकिस्तानी passport पे. So it was very complicated उस लिहाज से, but as far as like clientele और बाकी चीज़ें were concerned, वो चीज़ें manageable थी. But हाँ,
जब मेरे वीज़ा सॉर्ट आउट हुए तो शुरू में मेरी टीम मेरे साथ नहीं जाती थी क्योंकि उनकी अभी हिस्ट्री बन रही थी, ट्रैवल हिस्ट्री. सो वर्किंग विद पीपल स्पेशली इन इस्तांबुल, लाइक you barely find photographers or videographers who know English, and shooting with them, translating everything and then directing them, it was like not easy. मतलब मुझे याद है कि for the first like few events तो मतलब मैं दिन में 2 घंटे सो रही होती थी क्योंकि डेटा भी खुद कॉपी करना है. ट्रैवल जैसे ही लैंड करो उसके बाद इवेंट्स शुरू हो रहे हैं और मतलब it's not that simple. Right, when you don't have your own team, you have to do everything yourself. And even if you're getting people to help you, they don't know your style. They don't know my style. And you can't even trust fully, right? So आपको ही involved होना है through the whole process. Exactly. So उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता था कि 3 साल मैंने बहुत मेहनत करके बहुत like पाकिस्तान में एक चीज़ establish की है. Internationally तो बहुत easy होगा मेरे लिए, but it was like 20 times more difficult than how things were in Pakistan because I had a lot of help. Even from my family, like चीज़ों में मतलब मेरे बहन भाई भी मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, but वहाँ पे तो like I feel like मतलब on every single trip, like जितने में मेरा 1-2 दफ़ा तो meltdown आता है, like be it at the airport, be it while like literally telling people how to do things. क्योंकि टर्किश लोगों का थोड़ा हम ना ये भी होता है कि अगर उन्होंने आपकी बात सुननी और वो अब उनके हक में है तो they'll understand what you're trying to say. अगर उन्होंने नहीं सुननी they'll be like I don't understand. Like they'll just tell you. मतलब चाहे वो बहुत ज़रूरी बात है, if they don't want to agree with what you're saying they'll just tell you right away. So अब I think वो हर country के साथ like wherever we expanded it was different in Europe, it was different in UK, it was different in Turkey, it was very different for Dubai. So the challenge of culture is also a challenge, right? Like I never thought about that. So expansion is different like for every country. Matlab it was like a whole different challenge. Matlab for me the easiest place to expand in this whole world was Italy. Italy? Okay, why do you say that? Because people there are so nice, so welcoming. They're so down to earth. They are not cheaters. They will honest just tell you. They're very honest, they're very welcoming, and I think इसकी यही वजह है कि Italy like इतना recent times, like even if you like open Instagram everybody's there. It's because of the like how nice people are over there. मतलब जो चीज़ €100 की है वो €100 की होगी. Just because you're a tourist they will not like to rip you off. But things were very different in Istanbul. But I think Istanbul was the first destination that I targeted. और मेरी बहुत energy drain हुई है उस एक जगह पे expand करने के चक्कर में. But Dubai it was more convenient for me इस लिहाज से कि यहाँ पे you find your own people. Language barrier इतना ज़्यादा नहीं है. And it's home away from home. Visa के इतने problems नहीं होते. My team can easily travel. So I mean it was a very like we are still in the process. I'm still trying to figure out some other like 3-4 destinations जहाँ मुझे पता है मैंने इसके बाद expand करना है. But ये है कि I know कि वहाँ अलग challenges होंगे. People are different, their mindsets are different, and the fact that how open they are to accept someone जो पाकिस्तान से आके उनके country में business कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अब कितना welcoming हो. Welcoming tourist के लिए हर बंदा होता है, but not for people who are doing business there because they prefer कि हमारे अपने मुल्क के लोग आगे जाएं, which is fine, which is fair. But that's why you have to make your place, right? You have to show that we can offer you something really great so that they choose you, and that's hard. I think that is so hard. It is really hard. Are most of your clients abroad like locals from those places, or is it usually Pakistani clients? So initially for the first few years they were like Americans getting married in Istanbul, like Desi Americans, like who basically live in the US or Pakistan शायद बचपन में 1-2 दफ़ा आए हो type जो वो families. So they're having a destination wedding in Turkey. In Turkey or like anywhere in the world. For the first few years UK की families होती थी. पाकिस्तानी बहुत कम थे क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद एंड आई फील लाइक पाकिस्तानी वेडिंग्स आर लाइक वेरी लाइक बिग एंड ग्रैंड अपने ही तरीके में. वो किन किन को लेके जाएंगे, वीजा प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट. There's so much family, so many. They're not intimate. They're not intimate. Like even destination weddings are not intimate, but like obviously people who are living there, they have circles over there. उनके लिए travel करना और visa sort out करना इतना मुश्किल नहीं होता. And most of them don't even need visa to like
अब तो टर्की की भी इतनी बड़ी डिक्शनरीज आती है to apply, like, yeah, that's true. So but अब इस साल we have a lot of destination weddings of Pakistani clients who are getting married abroad, so I'm really excited for, like, those events as well, but yeah, so most of them were like based out of the US. Okay, so as a young woman who is doing her own business, and that too a photography business, which I know is, when I look at a photography business, I just think it's so challenging. It's so hard. It's a field work. And it's not just the photography part. It's everything that happens behind after that as well, and behind the scenes. And I know that it's very hard, right? And then, on top of that, the traveling part. Traveling in itself is not easy. Then traveling alone is not easy, and then doing a business, and then the equipment, and then looking after all of that, and the data and the clients. When I think about it, I'm just like, oh my god, how do these people do it? So that is stressful. So I want to ask you that, do you think that, like, how do you sort of manage that when it comes to your mental health? Because do you feel burnt out sometimes, or how do you sort of, do you think that you're in that phase, which I understand because I've been there as well, where you're just hustling and you're like, okay, right now my body and my mind can take the back seat. And it's okay, I'm scaling right now, I need to do this, and then maybe I'll take a break? Or are you this sort of person who has been trying to manage that side by side as well? What's your thought on burnout and mental health? And so I think last year before I got married, वो जो एक साल था पूरा, like engagement से शादी के दरमियान का period, हम ना, like, I think I worked every single day, मतलब कोई break थी नहीं. So at my शादी, like 1 week before my wedding, I lost like 80% of my hair because of stress. क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं तो काम कर रही हूँ, it's fine, मैंने break लेनी है, इसके बाद हो जाएगा. और it was not just that, I got really sick too in between. और वो ऐसी थी कि मतलब मेरा immune system इतना weak हो गया था कि हर 3 महीने के बाद मैं hospitalized होती थी 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि घर पे मैं recovery नहीं हो रही होती थी. So तब मैंने ये चीज़ realize की कि यार ये तो इस तरह तो काम नहीं चलने वाला. I am a service provider, and I know that my business involves dealing with people a lot. It's not just that I'm providing a service, it's also like customer service, and customer service drains my energy on another level. And it's also the most important, right? Because you have to have to retain your relationships with your clients for your business to be successful. Of course. Like if I have 1,000 clients, it's like 1,000 different minds, 1,000 different priorities, 1,000 different messages, 1,000 different needs. And I try my best कि मैं हर client की ज़रूरत को, like, जो वो मुझे कहें उस लिहाज से मैं उनको accommodate कर दूँ. अब उसकी वजह से ये चीज़ भी है कि आई फील लाइक, अब वही बात, आई विल नॉट से दैट माई कस्टमर सर्विस इज़ परफेक्ट, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी परफेक्ट हो. कोई ना कोई एक आधा क्लाइंट ऐसे होता है जो एट द एंड वो यही कहते हैं कि वी आर सो डिसअपॉइंटेड, विच इज़ फाइन. एटलीस्ट आई हैव लाइक 990 अदर क्लाइंट्स हु आर हैप्पी, विच इज़ स्टिल लाइक अ वेरी, लाइक, आई फील लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई टीम बिकॉज ऑफ दिस. बट खैर, कमिंग बैक टू द बर्नआउट वाला पॉइंट, सो आई डू टेक ब्रेक्स. मतलब अगर अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, लाइक I am away from home for a whole month. अब अगला पूरा महीना I'll be home. No matter how much money people offer me, I will not take up shoots. Because I need time. अब वही बात है कि वो वाले साइड में कभी पोस्ट नहीं करते, बिकॉज माई हस्बैंड, लाइक, ही इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, सो वी प्रेफर कि अच्छा इफ़ वी आर टुगेदर तो इतना ज़्यादा हम पोस्ट करें ना. सो लोगों को लगता है कि अच्छा ये या तो सारा टाइम काम कर रही होती है या शूट कर रही होती है, बिकॉज दे बिलीव व्हाट दे सी ऑन सोशल मीडिया. राइट. सो आई बेयरली पोस्ट. जैसे like if I talk about this, it's a business account as well, right? So it's not like, oh, it's your account. Exactly. So I recently made another account. उस पे I post regularly, like what I'm doing, what I'm up to, and all of that. But Picture Izzah का ये mainly, I'm also like changing a lot of business models और सारी चीज़ें. But yeah, कि when I take a break, then I want a break. Like फिर कोई there's no way back. I think people don't understand that Picture Izzah is actually behind the scenes of the business. Not your real life as such. I mean, it was at first, but then slowly I realized कि यार मतलब
you do want to show some layers of your life, because I think when you grow up you realize you cannot really put everything out there, तो आपको थोड़ा like differentiate करना पड़ता है. एंड मुझे लगता है कि शुरू में मैंने इतना ज़्यादा किया है कि लोगों को अभी भी लगता है कि जो मैं दिखा रही हूँ बस वही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, उसके अलावा आई डोंट हैव अ लाइफ, विच इज़ लाइक नॉट ट्रू. बट ये है कि आई डोंट डू इट लाइक अच्छा एक हफ्ता यहाँ तो एक हफ्ता कर. दिस इज़ नॉट हाउ आई वर्क. मतलब जो मुझे समझ आई है विद ट्रैवलिंग के साथ, और लाइक अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इज इन्वॉल्व, यहाँ तो आप एक गो में सारे शूट्स करके आ जाओ, फिर 2 महीने यू टेक अ ब्रेक. लाइक ये हफ्ते वाला सीन, बाय द टाइम आपका जेट लैग खत्म होता है यू हैव टू ट्रैवल अगेन. सो दैट इज डेंजरस. Okay. I don't do that. Like, मतलब Ramadan में I was home like the entire month and I traveled on Eid. So पूरा एक महीना, even though I was getting like a lot of shoot offers कि Eid collection है ये वो, but I was like नहीं मैं नहीं करूँगी. Yeah, so you do. So you prioritize. You know when you need to. Prioritize yourself right now and your health or your other aspects or areas of your life, and then you decide whether you want to do this or not do this. So abhi August mein I traveled to September mein, like I think I have to shoot a wedding in like 2 weeks. वो मैं 1st September को I'll be back home. उसके बाद I have to go for like 2 days in between somewhere else again, but I am not shooting until the end of September. September pura is my break month, so that I am ready for October, November, December, which are like my main wedding seasons. Yeah, of course, yeah. So you recuperate before that. Exactly. Like even if I get like curies in between just for the sake of making money, हाँ फिर मैं उनको ये कहती हूँ this is my team, you can go ahead with the team package, but I can't do it myself. Like and my business also works on first come first basis. Like मुझे पता है कि अगले समर में मैंने अगर एक महीना, अब ये भी एक चीज़ है, if I am shooting in Turkey तो अगला इवेंट मैं जापान में बुक नहीं कर सकती, क्योंकि I have to keep like make sense ना, कि अगर मैं एक महीना टर्की में करूँ तो उसके पास जो डेस्टिनेशंस है मैं वहाँ अगली बुकिंग्स ले सकती हूँ. I cannot be like one day I'm in Turkey and the next day I'm in New York. I can't do that. The traveling itself is so exhausting. मतलब one would go nuts. So I think it's more about like how you manage things, और वो manage हो जाती हैं at the end. It drains you. It drains me completely. Sometimes I also ask myself कि why like why are you like doing this to yourself? But then again like I enjoy what I do. So when you get that rush, then obviously like I was gonna ask you, this was actually my follow-up question, that because I've had you on the podcast before, so I know how you feel about photography and the passion for your work. So I wanted to ask now, a couple of years later, how much do you think the passion is still alive? How excited does this work still make you feel? Honestly, I feel like I was in a very bad creative block from the last like 6-7 months. And I was just like calling all my close friends और मैं उनको यही कहती थी, I think it's over for Pictro Izzah, because मुझे वो drive नहीं मिल रही है. Then one day I was traveling with this friend of mine and we started talking about it and I literally started crying like a baby. और मैंने उसको यही कहा कि यार मुझे लगता है कि although I'm getting clients but I'm not giving like my 100%, क्योंकि वो दिल से चीज़ आ ही नहीं रही है मेरी बाहर. Then she told me कि देखो you're going through a lot in your life right now and you don't give yourself due credit for that. It's not like कि you are, for example, मतलब मेरी मिसाल उस फोटोग्राफर की तरह नहीं हो सकती जो मेरे साथ अभी डेस्टिनेशन वेडिंग शूट कर रहे हैं, बट लाइक पाकिस्तान से ही हैं, बट मे बी उनकी कॉन्सिक्वेंसेज मेरी तरह के नहीं. आई हैव 2 sick parents at home, आई एम मैरिड, आई हैव लाइक अ लॉट ऑन माई प्लेट. तो यू कैन नॉट रियली बी लाइक कि मेरा काम क्रिएटिव क्यों नहीं हो रहा, बाकी सबका क्यों हो रहा है. देन आई डिसाइडेड कि अच्छा अगर ये सिनेरियो है, आई नीड टू लाइक काम माई सेल्फ डाउन. आई refunded like literally हम ना 50% जो मेरे clients थे उनको. I was like this is the situation. और especially after अम्मी a lot of my clients were really understanding about it as well, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी. And मतलब burn out तो मेरा अम्मी वाली situation से पहले का ही चल रहा था, क्योंकि वो जब बीमार थी तो मैं मानती नहीं थी कि मुझे हिट कर रहा है, बट वो मुझे हिट कर रहा था. Of course, because subconscious में वो पता है आपको, बट मैं नहीं मैं काम कर रही हूँ ये वो, बट मेरे से नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. So that was the point when I was like कि मे बी अब नहीं हो रहा है. एंड देन आई थिंक क्रिएटिवली फिर भी चीज़ें आर डिफरेंट फॉर मी नाउ, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी. बट आई फील लाइक राइट नाउ
I love doing business, not just photography. It can be any business. So over the years, वही बात है, आपके passions twist होते हैं, change होते हैं, evolve होते हैं. I think with photography, alhamdulillah, I'm very satisfied where I am or how I am handling my business and all of that. But one thing that excites me the most is the business side of Pictro Izzah, or any other thing that I might like launch in the future or whatsoever. So right now my passion is like just marketing and like experimenting with different brands and like my own brand basically, because that's my passion project, that's like my baby. But yeah, I mean, so you enjoy the business side of things as well. I love that. Yeah, that's really nice. Actually, that's such a good balance to have, because a lot of the times, like people who are creatives or the artists, they don't like to get into the business side of things, right? And not everyone is good with business. Not everyone is good with business. Because I have like, if I have like 30 employees, they all are creative brains. ठीक है, मतलब उनको एक business direction हमेशा चाहिए होती है. Yeah, of course. A few of them are really good with the business side too, but फिर at the end वही बात है कि I think there's this business coach जिससे मैं आजकल like I'm taking his classes. Okay. तो वो क्या करते हैं कि जो basically business owners होते हैं, उनकी टैगलाइन ये है कि वी बेसिकली मेक ऑनर्स पार्ट टाइम CEOs, और CEOs को क्रिएटिव साइड भी देखनी होती है, नॉट जस्ट लाइक द मैनेजेरियल साइड एंड लाइक रनिंग द कंपनी के अलावा दे शुड नो लाइक क्रिएटिव थिंग्स की भी नो हाउ कि क्या करना है क्या नहीं करना है. प्लस आई फील लाइक nobody, like I know this thing for a fact, like this is something that I've learned क्योंकि I used to get like Instagram पे messages भी, because I was like that one photographer जो दिन की 3 posts लगाती थी अपने पेज पे, and now I think in the last 6 months I barely posted like 6 to 7 posts in total, क्योंकि बस नहीं समझ आ रही थी. I was like trying to figure out कि मतलब मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ. Then I realized कि I have a brain. People can literally copy or replicate whatever I post. वो चीज़ आम हो सकती है या वो हर जगह जा सकती है, but nobody can take my brain away from me. And then I was like, okay, how about I just calm down and figure myself कि क्या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, and then I should come back with a bang. And that is what I'm doing right now. I love that. You know, that is so important, especially when you are creative. It's not possible for your circumstances or your situation otherwise to not affect your creativity, right? That's why people have creative blocks. And if you're not feeling inspired, if there's something on your mind, if something is going on, or your circumstances are not bringing you ease, then you can't be creative. So the thing is, for your brain to work creatively, you need to be in a very sort of calm, de-stress mode. Like if your nervous system is stressed out, if your nervous system is sort of in a freeze, fight or flight mode, or if it's hyperactive because of some reason, you can't perform creatively. You need ease and peace in order to be creative. And you know, the interesting thing that you said, like I want to bring it up here again, is you know, others don't have the same circumstances as you. And me being in the creative industry, I understand that as well, you know, especially, you know, after I became a mother as well, my circumstances changed. Obviously, I couldn't perform as creatively as I could before because I had so many more responsibilities, so many other things to do. So I completely understand when you say that it can get very difficult to be creative. All the time. All the time. But nobody can take your brain, right? No, I mean, I have the same brain, and that brain works, alhamdulillah, well in a way that I know for a fact that whenever I'll be back, I'll still like I'll come up with things something something. और मतलब मैं मुझे ये चीज़ भी लगती है कि you know how content creation or like generally पाकिस्तानी industry is के बस अगर कोई एक चीज़ कर रहा है तो बस बाकी भी वो सब करना शुरू करते हैं. So अगर वही चीज़ करनी होती हम ना, तो फिर मेरे पिछले 6 महीने भी अभी तक बहुत A1 जा रहे होते. Because I realized this thing back in January when I had like, I think that was like the worst like
point of my life, मुझे नहीं समझ आ रही थी वही जो हम कुछ दिन पहले भी like when you and I were talking intuition वाली जो चीज़ है कि like आपको पता है कि कुछ गलत होने वाला है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको बग कर है. At that time I decided कि मुझे किसी रेस में जाना ही नहीं है. ना मुझे लेफ्ट देखना है ना मुझे राइट देखना है. इवन लाइक माई क्लाइंट्स वर लाइक वो मतलब हमारी शादी आपने शूट किया, यू नेवर पोस्टेड अबाउट इट, लाइक मे बी इट वॉज नॉट गुड इनफ. एंड आई वाज लाइक नो दैट्स नॉट द केस, इट्स जस्ट मी बीइंग माई सेल्फ. ना मुझे लेफ्ट देखना है ना मुझे राइट देखना है ना मुझे किसी के कंपेरिजन में आना है. मुझे बस अपने आप पे फोकस करना है. एंड व्हेन आई कम बैक आई जस्ट वांट टू लुक अप एंड आई वांट टू फोकस माई सेल्फ. मुझे अपनी प्रोग्रेस को देखना है, मुझे नहीं देखना कि बाकी सब क्या कर रहे हैं. मतलब मैंने लिटरली सबके अकाउंट्स म्यूट पे कर दिए, मुझे कुछ देखना ही नहीं है. लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू रीलर्न एंड आई वॉन्ट टू डू मैपिंग वंस अगेन माई सेल्फ इन 2023. बट वही बात है कि थिंग्स changed eventually in the next months. और मतलब I remember I got a QE for this really big wedding that was in Istanbul. And normally like जब कोई क्लाइंट्स किसी के रेफरल से आते हैं तो वी डू प्रायोरिटाइज देम. बट पता नहीं लाइक वो मेरे दिल में एक चीज़ थी कि यार मुझे नहीं करना चाहिए. और जिन जिन इवेंट्स को मतलब मैंने ना किया या अगर कुछ क्लाइंट्स लाइक मतलब बेसिकली इफ थिंग्स डिडंट वर्क आउट, हम ना वो वही टाइम था जब कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसी बड़ी ट्रेजेडी या ऐसा बड़ा कोई पॉइंट आना था और मुझे घर होना था. सो एवरीथिंग मेड सेंस इवेंचुअली. और ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्सफुली बस आप सभी करते जाओ, ऐसा नहीं हो सकता. यू नीड टू गिव. और वही बात है कि लाइफ है, डोंट टेक इट लाइक दिस इज़ एवरीथिंग. Just be patient. You'll be successful if you're patient. You'll be miserable if you're not patient. You'll have a lot of money, you'll have good fame whatsoever, but if you're not patient with all of that, you'll be miserable. And then वही बात है, I don't want to live like that. I want to live. You want to live. I want to feel. I want to like, and I feel like जब आप बहुत काम कर रहे होते हो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या ही कर रहे हो. You are like in another zone. So it's very mindless, right? Like you want to live more mindfully. Like every piece of work, you want to feel it. So I get you. I'll rather do that for the rest of my life. And I know abhi like I'm shooting very few weddings this year myself. Sorry to the clients जिनको मैंने मना किया है, because a lot of people really wanted me on board. But जब मुझे पता है मैं ऐसे पैसे का क्या करूँ जब मैं अपना 100% दे नहीं सकती. Right. So I'll rather shoot less, give myself some break in between. अगर एक 5 इवेंट्स शूट कर रही हूँ बैक टू बैक, देन आई गिव लाइक माई सेल्फ 2 weeks की ब्रेक. उस इवेंट को अच्छे से एडिट करूँ, डिलीवर करूँ, फिर अगले इवेंट की तैयारी करूँ, काम करूँ. पाकिस्तान में मसला यह है कि हम ना वंस यू आर पॉपुलर इतना ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं एंड देन यू ओवर बुक योर सेल्फ एंड देन यू आर लाइक, और फिर हर शूट आपका सेम लग रहा है तो आप कहाँ जाओ क्या करो. सो I'll just like take it very slow and smooth and be mindful and everything. Baki hai ki my team is there and we are open for those packages. But with that like. Okay, so that makes a lot of sense. I think you know mindless rush में बंदा है काम करता रहे, exhaust भी हो जाता है and you don't stop enjoying the work as well. And you don't feel connected to your work, right? When you pick and choose, when you feel like you're mentally more present, you can give this your best. And I think this is so important for any kind of person who is any kind of creative work. The more you consume, the less you are able to create for yourself. So the mute thing, it's so essential for people who are doing anything creative, because all sorts of consumption basically serves as noise, right? All it does is it stops you from listening to your voice and your original thought. Even and brain. Your original creativity. You're not using your brain to create what you like or create the content that you share with your clients. You're literally replicating what you see online. And I will not say that कि मैंने ये चीज़ कभी नहीं की, ना चाहते हुए भी हम ना आपको नहीं पता चलता. आप कोई चीज़ देखते हो आपको अच्छी लगती है, eventually like it is stuck in your head. It's stuck in your head. So I'd rather not see things that I don't want to like. I think creative people really need to control the amount of consumption they do. Because I know a lot of people say, you know, if you want to be a content creator, you need to consume a lot of content. I feel like that's the complete opposite advice. You need to not, because then you will
completely fail at being an original. Yeah. And you know, recently, because you shared the whole "but nobody can take my brain" thing, recently a really good friend of mine, she started a really, really good initiative. You know, she did a really good thing. She's a therapist, so she came up with this support group, and she's doing a really good job at it. And it was completely her own baby. She put her own thought and effort into the entire thing. But then a lot of people sort of replicated and copied her idea and started doing the same, and you know, literally copied the exact same way of doing her stuff. Lots of things very apparent कि अच्छा बिल्कुल छाप दिया. So she came to me and she said, you know, I know that you've been in your line of work, this happens a lot. So how do you deal with that? And you know, I told her the same thing, that there are some people who will always be originals, and then there's some people who will always be followers. Right? And the originals, and if you're worried that, you know, these people are copying everything you do, right? The thing is, they can only go so far, because they're gonna have to wait for you to do the next thing. Oh god, I can relate to it on so many levels. Then they will know what to do next. And I've been on that so many times. Oh god. So many times. So that's what I told her. And she said, okay, yeah, that makes sense. I'm like, listen, makes sense. Yeah. It's okay that they're copying you, but a couple of things to remember. Number one is that, and this is for anybody who thinks that they're being copied, or you know, their originality is being taken away from them, that means that you're the original, they're probably the follower. Then another thing is that if they're also working towards a cause that you're passionate about, then maybe you can look at it this way, that more people are also contributing to the same cause. So that's okay, right? The cause is the bigger picture. So for her, that applied more because it's a therapy thing, it's a support group thing, so it's okay. And another thing is, and I mentioned this previously and recently in a podcast as well, that we need to understand that Allah Mia is so abundant that just because, you know, two other people are doing what we're doing as well, it doesn't actually take away from you. You know, it's not like it's because someone took or is doing what you're doing. It will, you know, make your pie smaller. The pie is very big, and Allah Mia has a lot to give. And you know, you just focus on you. And I think everyone, मतलब मुझे लगता है जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ट्रेंडिंग में होती है तो हर बंदे ने वही चीज़ करनी होती है किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट लाइक इन वेडिंग इंडस्ट्री. मुझे लगता है वही आपके वाली बात के अल्लाह मियाँ बहुत, मतलब मुझे चीज़ लगती है कि हम ना अगर सब लोग अपना दिमाग यूज़ करके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें क्रिएटिव एस्पेक्ट से. एंड आई ऑल्सो फील दिस थिंग विद द बिजनेस मॉडल टू, कि मतलब जस्ट बिकॉज if I am like going towards like a certain business model, तो मैं अपने consequences को mind में रख के उस business model की तरफ जा रही हूँ. I am not just like going towards it just because like it is like the best one out there. It is best for me because of my consequences. You don't have to do the exact same thing because you can do much more. Like आप उससे बहुत बेहतर और बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हो जो शायद मैं नहीं कर सकती मेरे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से. तो मुझे लगता है कि पीपल कैन ग्रो अ लॉट इन आवर कंट्री इन अ लॉट ऑफ वेज. और इतनी शादियाँ होती, मुझे लगता है इतने वेडिंग फोटोग्राफर्स नहीं है, जितने इवेंट्स होते हैं, टाइम्स लोग बेचारे अपने खुद के कैमरा से अपनी कजन्स पिक्चर्स ले रही होती है बिकॉज दे डोंट एंड अप हायरिंग लाइक प्रॉपर फोटोग्राफर्स स्पेशली लाइक इन प्रॉपर वेडिंग सीजन. तो मुझे लगता है कि अगर लोग वही बात है अपना ब्रेन यूज़ करके अपनी एक प्रॉपर नीश डेवलप करें तो फिर लाइक उस नीश से जो लोग रिलेटेबल होंगे फिर उसी टाइप के क्लाइंट्स आएंगे. ओवरऑल एक चीज़ फिल्टर आउट होगी. जैसे मतलब विद मी लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि मैं शादियाँ प्रमोट नहीं कर सकती अपने पेज पे. जब मुझे कोई क्लाइंट आके ये कहता है कि जी हम आपको हायर कर रहे हैं सो दैट आप इतनी स्टोरीज लगाएं, या हम आपको जी 200K लेट्स से ऊपर एक्स्ट्रा देते हैं, आपने हमारी पिक्चर्स लगानी है, ये वो. नो, आई विल नॉट डू दैट. I will never do that. I know I'm running a business and I want to make money, but not like this. So I know कि मुझे किस तरह के clients चाहिए. I'll rather go for clients जो मुझे कहें कि मत post करो, because even if I'm not posting, at the end I'm enjoying what I'm doing because 90% of my clients don't allow me to post anything on social media. Like I have such great videos and pictures, but they are like very low key. So I'll prefer myself to work with such people. Okay, that's interesting. So there is like, मतलब इसके इतने perspective है. Like when you run like वही बात है service based business में, मुझे लगता है कि लोग जो पैसे देते हैं they think that they own you. That is one thing that I hate the most. Oh yeah. They think, और फिर like खुद ही से assumption कर रहे हैं कि ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ये हमारा, ऐसा नहीं है. No.
इफ़ यू आर लिटरली, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, आपने मेरी मर्जी की लोकेशन क्या ही होएगी, मतलब लोकेशंस तो आधी से ज़्यादा गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेनी है, लाइक उसके तो इतने चार्जेस नहीं होते। मैं उनको ये तो नहीं कह रही कि आप यूरोप में शूट करें मेरे साथ आके, आप सुन नहीं रहे हैं, आप इवेंट पे मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी लाइक मुझे क्रिएटिव करने नहीं दे रहे हैं, एट द एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू पोस्ट व्हाटएवर आई शॉट on social media. That is not how it will work. And I'm at that stage in my business where I want to put up just my best quality work, because of course I know I shoot a lot of weddings and I've shot, but obviously अगर मैं अब quality की तरफ जा रही हूँ तो I'll show what I like and what is like, एक ये चीज़ भी है, मैं वही शूट कोशिश करती हूँ पोस्ट करूँ जो फुल मेरे अंडर कंट्रोल होते हैं। द ब्राइड्स आर रेडी ऑन टाइम, पोजेज जो हमने डिसाइड किए हैं वो हमने, ऑब्वियसली लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं इन द शूटिंग प्रोसेस, बट या जितने इसके एस्पेक्ट्स देखें, बट मैं तो ये बार बार एक ही बात सोचती हूँ, एंड लाइक दैट थिंग इज़ वेल जो आपने कही, इट हिटेड मी अ लॉट, बिकॉज आई रिसेंटली गॉट अ मैसेज फ्रॉम समबडी, मतलब उसने मुझे बहुत प्यार से किया, बट देन आई वाज लाइक नो, लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई रियली वांट। फिर मैंने उसको बोल भी दिया, शी मैसेज मी सेइंग दैट यू नो यू आर नॉट पोस्टिंग अबाउट लाइक योर अपकमिंग प्लान्स और लाइक व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, बिकॉज आई लिटरली फॉलो व्हाट यू डू एंड इट्स डूइंग रियली वेल फॉर मी, एंड देन आई वाज लाइक, मतलब ना मुझे गूज बम्स आए, ठीक है। एंड शी इज़ बेसिकली फ्रॉम अ ग्रुप जहाँ पे और भी बहुत फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है। एंड शी वॉज लाइक नहीं, हम यही बात कर रहे थे कि अब इज़्ज़ा क्या करेगी, टिकटॉक पे क्या पोस्ट करेगी, तो हम भी उसी तरह के वीडियोस करें। एंड आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने फिर उसको बहुत प्यार से ये चीज़ एक्सप्लेन की कि देखो लाइक मुझे नहीं पता मैं कब वापस आ रही हूँ, यू डू यू, लाइक आई मीन आई लव दिस कि तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रही हो कि तुम्हें लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है बिजनेस रन करने का, बट मैं भी तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कोई गारंटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स फॉर मी एट टाइम्स, बट 90% ऑफ द टाइम्स नहीं भी काम कर रही होती टेक्निक्स, बट इट गेव मी गूज बम्स कि यार मतलब लोग वेट कर रहे हैं मेरे वापस आने का काम पे, बट आई मीन आई साउंड रियली सेल्फ ऑब्सेस्ड. No, you're just sharing your truth. Yeah. It's fine. But it was just like I was like, अच्छा अगर ये लोग मुझे फॉलो करते हैं, हम ना अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो इतने लोगों का नुकसान हो जाएगा मेरी वजह से. हाँ, but that's not on you, right? That's up to them. But it's not my responsibility. It's not your responsibility, right? That's the thing. So it was hitting me a lot, and I was just thinking about it again and again that, oh my God, like as you said, that people are waiting for my next move. But again, I don't gatekeep a lot of things. I do tell people कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, especially people who are like setting up their businesses right now, जो grow कर रहे हैं, कोई भी client का मसला, like vendors के problems, they do share with me and I guide them in every possible way. But I tell them that listen, like don't follow me. Like जो भी आप like उनका business aim है, like make it like big in a way कि मतलब मैं आपसे inspiration हूँ in the future. Yeah. So yeah. But okay, so recently you lost your mother. Yeah. So and you know you were talking about that you know your mental health, you have to manage it side by side on your business. So after your mother's loss, did you go back to work? Did you decide to take a break? Did you try working? How are you dealing with that? So I was just talking to my sister when I was coming to your house aaj, or we were just telling each other that both of us are like really scared to be alone. And then there is someone in our family who's very spiritual, and that person told my sister that it is because both of you are still in denial, क्योंकि जब तुम लोग मान जाओगे कि यही अल्लाह की रज़ा है तो तुम लोग इस चीज़ से डरोगे भी नहीं. So maybe like, और वही बात है कि हम ना this is something जो like I mean I have no words. मतलब काम तो करना है, ज़िंदगी तो आगे चलनी है, बट ये है कि फॉर मी ऑनेस्टली यही बात मैंने आपको भी पहले बोली थी when I spoke to you that I did all I could in my capacity to save my mom. Whatever happened, अल्लाह ताला ने मुझे like यहाँ से उठा के यहाँ आगे फेंका है, तो उसकी कोई रीज़न, ये जो मुझे सबसे बड़ी रीज़न समझ आती है वो यही है कि apart from like the fact that he took my mom away, the second thing is that he told me that no matter how much money you make, you're nobody. You are literally a nobody and you have nothing in your control. क्योंकि I feel like जो लोग इस दुनिया को ही अपना
जिस तरह मैं थी आज से कुछ महीने पहले कि oh this world is everything and my career and this and that. Yeah, it doesn't like matter. Your perspective towards life has really changed. Yeah, like it's I guess these big events like this, they really humble you. Yeah, it's just like, okay, you know, this world really is temporary, and no matter how much you try to control every aspect of your life, truth is nothing is actually in your control. Sometimes it can be a facade, you know. God can make everything happen your way and you think it's because of you, but actually if God doesn't will, then it's not going to happen no matter aap jo marzi koshish kar lo. And if it God wills, then no matter how much you don't want it to happen, it's gonna happen. No, so for years, like I kept like telling myself that whatever I'm doing in my life, however I'm doing expansion, this and that, matlab, I remember telling you when I was expanding to Mykonos, Greece, it was like my dream destination. I did tell you कि हम ना like जब मैंने वो एक वीडियो शूट करनी थी, remember I messaged you. So मुझे लगता था कि वो मैं सोचती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, अल्लाह मुझे दे देते हैं, या अल्लाह ताला से भी ज़्यादा मुझे लगता था कि अपने आप को मैं ये कहती थी, ओ आई मैनिफेस्ट लाइक दिस इज़ माई मैनिफेस्टेशन, आई मैनिफेस्ट गुड थिंग्स. और फिर मैं अपने आप को ये कहती रहती थी कि ओ आई विल नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग बैड बिकॉज देन बैड विल हैपन. ऐसा नहीं हो सकता. अगर कोई बुरी चीज़ होनी है, चाहे आप सोच भी लो, it will happen. Like वही जो कुछ चीज़ें like you explain me when I met you, मुझे उससे पहले तक लगता था कि क्योंकि मैं बुरा सोच रही थी तो मे बी दैट्स वाई बुरा हुआ. लाइक डीप डाउन मैं अपने आप को भी इस चीज़ पे ब्लेम करी थी. स्टिल लाइक मुझे लगता था मे बी आई मैनिफेस्टेड समथिंग रॉन्ग एंड दैट्स वाई समथिंग बैड हैपन. बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होते हैं तो वो उससे नमाज छीन लेते हैं. दे डोंट प्रे. लाइक आई हर्ड दिस, आई एम नॉट श्योर हाउ true it is. I'm not sure if this is something that is written in Quran, but I heard it somewhere and then it was relatable to me in a lot of ways because मैं नमाज नहीं पढ़ती थी और मेरे ऐसे दुआ भी नहीं मांगी जाती थी. Because now this is something again I'm sharing on your podcast. I know people might hate me for this, but whatever I got in my life, I am really, really grateful for that. But for the longest time, I did not pray for it. And I'm really lucky to be where I am today. I worked really, really hard. But होता ना कि आप दुआ मांगते हो कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरा ये काम कर दें. I've never done that. Apart from like, obviously, my mom's health and my dad's health. Like उन दो चीज़ों में तो मैं बिल्कुल बेबस थी कि मतलब नहीं. But when it came to work and other kind of things in life. I never like really prayed. और मेरी अम्मी मुझे यही कहती थी कि दुआ मांगा करो. और ये चीज़ मेरी अम्मी को पता थी मेरे बारे में. मैं ये कहती थी कि मेरे दिल में होता है तो अल्लाह पूरी कर देते हैं ना. दैट वॉज लाइक माई आंसर फॉर लाइक वेन एवर इट केम टू प्रेयर्स. बट अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है जब आप हाथ उठा कर दुआ मांगते हो फॉर समथिंग, यू आस्क फॉर इट, और अल्लाह उससे ज़्यादा देते हैं आपको. बिकॉज द थिंग विद दैट इज लाइक सी I've personally always see Allah Ta'ala as very rahim wale, very kind, not one to like I don't really focus on or think much about his angry side, or like I always see him as a soft, forgiving Ghafurur Rahim. That. So but the thing is that while you see Allah as that, it's the reason why he wants you to put your hands up and say what you need to say, and the reason why you maybe felt humbled by this is because if there is one thing that I feel, that no matter how much success you have in the world or whatever you get, it's just so important to consistently remember that it's because of him. It's because of him. And when you put your hands up and you ask, then then it's basically, you're basically saying that I know that you are the one who will give it to me, right? So no matter how much hard work I put, no matter how much I manifest this for myself, if you will, then it's gonna happen. And I feel like they're the two most basic ways to show that that this is because of him is, one, asking him, and two, when you have it, thanking him. Because
You ask him because he's the only one in him who can give, and you thank him because he's the one who gave. Yeah. So almost every night, I have this conversation with my husband, like however far we come in life, and especially when something really good or great happens, I always remind him, and now he reminds me as well, that this is because of him. Yeah. Like hum jo bhi kar le. And I said that I always see, like the reason why I mentioned the Ghafoor Rahim wali baat was, I feel like if there is one thing that Allah Ta'ala punishes you for even in this world, is your arrogance. Yeah. And I got punished for that. I mean, punish is such a harsh word, but I just feel like it's such an important thing to be grateful and to humble yourself. Yeah. And I just feel like God will, let's not use the word punish, but he will remind you that I'm there. That listen, like, you need to humble down. Like, I'm there. I'm the one who is doing this. Yeah. And I just feel like it, and generally as well, I think last time we discussed as well the whole idea of, because so many people online, this is such awful things, hate karte hain, aapko dehumanize karte hain, they forget that you're a human too, right? We all are gonna lose our parents one day, or our parents will lose us, and people forget that कि अगर कोई आज इस situation में है, for example, if I am in this situation today, you have been in this situation in the past, and if they are like saying things that are very very mean, लोगों को लगता है कि जो अभी उनकी condition है ना, ऐसी हमेशा रहेगी. If they have a good life will stay forever. No. And if they have a bad life, then the bad life is constant, because अल्लाह ताला दोनों केसेस में कहते हैं ना ये टाइम रहेगा ना वो टाइम रहेगा. और जहाँ तक वही हेट वाली बात है, वही बात I keep on repeating the same thing again and again. It implies on me and you as well. If we say one mean thing about someone, like one mean thing हमना, like वो कुछ भी हो सकता है, हम हम रैंडमली किसी के बारे में कमेंट भी पास करें ना, ये देखो ये तो लाइक ये क्या कर रही है, ये क्या शूट कर रही है, लाइक I'll hear the same thing about me. और मुझे तो खैर 2 दिन में ही पता चल जाते ना. I hear the exact same thing about me like in the next 2 days if I say like one bad word about someone. Yes, and this is the same thing. So basically, like I keep seeing that most of the karmic energy that comes back, or like whenever you are taught a lesson, like if there's one lesson you remember that Allah Ta'ala teaches you, it's always about humbling. Yeah. Like, and you will see, you said this about someone, and then you will feel the same way, because someone will say something or something very similar will happen, and maybe it's not even similar, but you will know. You will know that this happened because you did XYZ in the past. Yeah. And I think a lot of people say कि आपने अपने actions का pay करना है, but मैंने personally जो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, but maybe like मैं इस चीज़ के बारे में गलत भी हूँ. Like if my grandparents did something wrong to someone, and if they did not repay for that in this world, maybe like मेरे parents उस चीज़ का सफ़र करेंगे या उस चीज़ को रीपे करेंगे. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन अ लॉट के लाइक मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग लैंड ग्रैब करते हैं, लेट्स से किसी गरीब के बच्चों का, चाहे वो इस वक्त इस दुनिया में बहुत अमीर हो जाए एंड देन दे डाई, उनकी जनरेशंस उस एक पॉइंट पे आएंगे जब उनसे वो चीज़ छीनी जाएगी जो उनकी अपनी होगी. सो आई थिंक बिकॉज यू लीव दैट एनर्जी बिहाइंड इन दिस वर्ल्ड. एंड और वही बात है कि आपके अमाल जो हैं, जैसे मेरी अम्मी ने अगर ज़िंदगी में मतलब शी टॉट लाइक इन अ स्कूल जो बेसिकली एक शिया मेजोरिटी था, और स्कूल में सब सुन्नी टीचर्स थे, और वो बच्चों को बहुत मारते थे किस बेसिस पे कि हाँ ये तो लाइक मुसलमान ही नहीं है बच्चे. एंड व्हेन माई मॉम स्टार्टेड टीचिंग व्हेन शी वाज ओनली 22 राइट आफ्टर हर ग्रेजुएशन, शादी से भी पहले उसी स्कूल में. और मतलब मेरी अम्मी ने 25 साल उस स्कूल को दिए, और मतलब मुझे याद है जब वो रिटायर हुई थी तो उस एरिया के लोग रो रहे थे, पूरा गांव रोया था कि ये चली जाएंगी तो अब हमारी जनरेशन्स का क्या होगा. क्योंकि पहले तो स्कूल भेजते ही नहीं थे ना कि बच्चों को मार पड़ती है, सही से पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में उस टाइम पे आप लाइक कोई भी टीचर लाइक सिफारिश दे के मतलब अपने आप को गवर्नमेंट टीचर भर्ती करवा लेते हैं, जिस तरह लोग मतलब अगर कोई साइंस पढ़ा रहा है तो उसका साइंस मेजर भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा क्या पढ़ाना है. तो मैं बचपन से ही ना मतलब मैं ये सोचती थी कि यार मतलब मैं अपनी अम्मी को भी पूछती थी आपने इतना किया है तो मतलब
और वो आगे से मुझे ये कहती थी, देखना तुम लोगों की सूरत में मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी उम्र दे दी ना, लाइक 23 साल की. माई मॉम पास्ड अवे व्हेन शी वाज 52. लाइक वो अपनी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा, लाइक कुछ साल पहले ही वो रिटायर हुई हैं. मतलब मुझे याद पड़ता है 2-3-4 साल पहले मैक्सिमम. तो वो यही बात कहती थी कि देखो मुझे शायद ना मिले बट तुम लोगों को उसका अजर मिलेगा. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, कि अगर मेरी अम्मी ने मेरी कोई PTM मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के सेगमेंट्स मिस किए थे जस्ट बिकॉज शी वॉज टीचिंग दोज गर्ल्स एट स्कूल ओवर टाइम, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए पता नहीं किन किन चीज़ों में आसानियाँ की. लाइक वी अस लाइक एज सिबलिंग्स, लाइक क्या पता जो हमें इतनी लाइक वो तरक्की मिले, इट्स बिकॉज मेरी अम्मी ने जो लोगों के साथ अच्छा किया शायद उसकी वजह से मिल रहा है. हाँ, आई एग्री. लाइक दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट माई मदर इन लॉ. सो यू नो माई मदर इन लॉ, she never wasted any food in the house, right? She would make sure that nothing goes in the trash. Like वो बहुत value करती थी खाने की, risk की. It was, and she's also very giving, like extremely generous. You know, she looks after like the poor and the needy, and she does a lot of charity work, and with the most, बहुत लोग करते हैं, but with the most purest heart and yes, right? And mashallah, her kids are doing so successfully. It's incredible how successful each of her children are in their own way. और कितना रिस्क अल्लाह ताला ने उनके बच्चों को दिया है. Abundance, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, right? And I just feel like it is because of her care for risk. Yeah. And it's because of her care for giving others, and that energy has returned to all of her children. मिलता है आपको, वापस आता है, वापस मिल रहा है to her kids. Yeah. So I think there is some truth in that. Yeah. It works in that way. Yeah. Okay, so Izzah, how long are you here in Dubai now? Are you leaving soon? Yeah. Is your work done? So my work is not done yet. Okay. But I think I will be going back because there is something that is bugging me, and somebody is not well in my close family back home. Okay. And it's not that these are negative thoughts, but like my intuition is telling me that this is something that I ignored in the past and I regretted it big time. But this time I don't want to go through the same thing over again. So I just like book my flight and I'll go back in a day. Can you tell do you want to tell about what happened last time? Yeah, so basically when my mom got unwell, it was like in March, and I was going for my graduation. Hamail was getting married at that time, and I was miserable even on her wedding. At the airport, I've never cried before taking a flight. Like I cried like a baby in Islamabad airport, and I video called my mom, and even she was crying, and deep down बस वही बात है कि my heart वो, and I did tell them कि please आप लोग अपने visas apply कर लें. They did not apply on time, although my university gave them invites as well. But वो जिस तरह देसी parents होते हैं, lazy हो के, and then eventually things just don't work. तो मैं नाराज़ भी हो रही थी, but खैर अगले दिन मेरी graduation थी, and like I video called her again, and she got so overwhelmed. Although it was like one of the happiest day of my life. मतलब मुझे याद है जिस एग्जैक्ट टाइम पे आई वाज लाइक गेटिंग माय डिग्री, उस टाइम पे माय मॉम गॉट पैरालाइज्ड. एंड ऑल्दो आई वाज हैप्पीएस्ट, एक होता है मिस करते हो, एक होता है कि आपका दिल आपको कह रहा है कुछ सही नहीं है. तो मेरे से ना लाइक वो डिफरेंस मेरे में नहीं मुझे समझ आया था कि मैं कैसे क्रिएट करूँ. खैर उससे अगले दिन ही मेरी वापसी की फ़्लाइट थी, एंड एट द एयरपोर्ट दे टोल्ड मी दैट ओ योर मॉम इज़ रियली अनवेल. माई कज़न कॉल्ड मी एंड आई वाज लाइक ओके. और मैं दिल में सोच रही हूँ कि जब इस तरह किसी को कॉल आती है, और मेरे कज़न ने कहा कि प्लीज़ अपने इन लॉज की तरफ मत जाना क्योंकि तुम्हारी लैंडिंग जो है वो इस्लामाबाद में, कम टू लाहौर डायरेक्टली, योर मॉम इज़ नॉट वेल. तो मुझे लगा कि शायद ये लोग इस तरह से मुझे कर रहे हैं क्योंकि अम्मी को कुछ हो गया है. और फिर मैं वापस आई पूरी फ़्लाइट में अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि हम ना लाइक, अगर वही जो मेरा एरोगेंस फेस तब भी चल रहा था कि अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ तो मैं पहले सोचती थी कि मैं दुआ मांगना शुरू होंगी, अब तो मैं बिल्कुल दुआ नहीं मांगूंगी. और लाइक मैं अल्लाह ताला से फुल लाइक यू नो आई एम इन दैट मोड वेयर आई एम लाइक क्वेश्चनिंग हिम एंड ऑल. खैर आई लैंडेड, आई टुक अ कैब, कोई मुझे लेने भी नहीं आया एयरपोर्ट पे. आई वेंट टू लाहौर, लाइक शी वॉज ऑन अ बेड, एंड मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनको कहा कि लाइक क्या हो गया, आपने अपना ख्याल नहीं रखा. थैंक गॉड शी वॉज फाइन, बट शी कुडंट टॉक बिकॉज मुझे तब
तब तक भी किसी ने नहीं बताया था कि वो पैरालाइज्ड है. Okay. तो जब मैंने उनको देखा, was it because of like a stroke? Did she have a stroke? Yeah, she had ischemia stroke. Ischemic stroke. Yeah, so that happened because she was so overwhelmed. Obviously she had diabetes, लेकिन एक कभी होता है ना आपको टेंशन से स्ट्रोक आता है या कोई ऐसी खबर आप सुन लो, but she got so overwhelmed कि overwhelmed होके she just like मतलब वो ग्रेजुएशन वाली चीज़ का, क्योंकि my mom knew that how I worked so hard, and like from having blisters on my foot to like this, there was this one time कि हम ना मेरा पाँव जल गया था. I was wearing like slippers और तब we didn't have a car और मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी. तो मैं रक्शे से नीचे उतरी हूँ तो वहाँ पे किसी ने कचरा जलाया हुआ था, तो I didn't notice और वो मेरे कचरे में पाँव चले गए and I burned my foot, like both my feet. और मैंने क्लाइंट को बताया तब like नए फोटोग्राफी थी कि मैं नहीं कर सकती शूट, फेयरवेल शूट, एंड शी वाज लाइक आई डोंट केयर, आई विल राइट अबाउट यू ऑन लाइक दिस पेज एंड आई विल ruin your business. And I did her shoot like with my burnt feet, and by the time I came back home, like मतलब मेरी अम्मी ने लिटरली मुझे याद है, शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज लाइक डोंट डू दिस टू योर सेल्फ अगेन, और वो कट कर रही थी लाइक एक्स्ट्रा, लाइक it was like really painful. खैर और फिर the next day I was at the shoot again because वही जो client थी उसने अपनी family shoot book किया हुआ था. तो मतलब मेरी अम्मी ने ना देखा है मुझे लाइक गर्मी में, सर्दी में, रोज़ों में बेहोश होते हुए, क्योंकि मतलब फ़ीस के पैसे पूरे करने हैं, ये करना है वो करना है. तो उनके लिए उनको था कि ऑब्वियसली वी डोंट कम फ्रॉम अ जनरेशनल वेल्थ जहाँ पे अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जहाँ की फ़ीस ज़्यादा है तो आप ज़मीन बेचो और फीस दे दो. यहाँ हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं थे. माई मॉम वॉज जस्ट अ स्कूल टीचर एंड माई डैड वॉज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम. तो मतलब अम्मी 50,000 की सैलरी में से घर का राशन पूरा करेंगी या मेरी फ़ीस देंगी, तो वो खुद भी बहुत हेल्पलेस थी मतलब. और फिर जब वो मुझे कहती थी कि अच्छा मैं कंट्रीब्यूट कर देती, मुझे होता था कि यार अभी मेरे 4 और बहन भाई छोटे हैं, लाइक मैं ही सब कुछ ले जाऊँ, लाइक दैट इज़ नॉट फेयर एज वेल. तो फिर ग्रेजुएशन डे वॉज समथिंग वेरी लाइक, it was a big token of success, right? It was a big reward after everything. Yeah. So बस फिर उसके बाद लाइक तब भी मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा. फिर खैर again as I said, I did all I could in my capacity to save her, like सब कुछ, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बड़े से बड़ा लाइक न्यूरोलॉजिस्ट, लाइक मतलब मैं अपने बिकॉज आई वॉज लाइक आई ऑलवेज टू केयर ऑफ माई मॉम लाइक अ बेबी. तो मतलब मुझे पता है मैंने ड्यूटी लगाई होती थी अपनी कजन्स की कि भाई न्यूरोलॉजिस्ट आने वाले हैं, अगर वो 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं लाइन में लग जाओ, उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा ऊपर देने पड़ेंगे अपनी ड्यूटी टाइम के, बट आज ही अम्मी का चेकअप हो. लाइक एक चीज़ आई मेड श्योर, मतलब मैं पागल हो गई थी टू द पॉइंट कि जब अम्मी के कोई पता लेने आते थे और जब उन्होंने थोड़ा बोलना शुरू किया तो कोई मेहमान आया हुआ है उनका हाल चाल पूछने के लिए, तो अगर मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ तो वो मेरी वीडियो कॉल पिक करेंगे और बस वो यही कहती रहती थी सबको कि देखो ये मुझे बहुत तंग करती है और ये मुझे सांस भी नहीं लेने देती है. मैं सोती हूँ तो मुझे तब भी सो के उठा रही होती है वीडियो कॉल्स करके. तो वो मतलब वो कहती बस relax, like I'll be fine. And then eventually she got better, alhamdulillah. और मतलब I was in Karachi and then I was miserable in Karachi कि मतलब वो पागल नहीं हो जाता इंसान के माँ पीछे. और माँ मतलब obviously मैं travel कर रही थी ग्रेजुएशन से पहले भी, तो I had to go back to like my house as well when जब अम्मी थोड़ा बेहतर हुई. लेकिन मुझे ये था कि फिर भी सारा टाइम वीडियो कॉल. तो फिर my husband like he called from his office one day and he was like should I call your parents here. मैंने कहा यार मतलब how, like then he managed something क्योंकि अम्मी चल नहीं सकती थी तब. he called my puppo, my sister, my dad and my mom, and then they lived with me for the next few days क्योंकि मुझे बस ये होता था कि बस मेरी अम्मी मेरे सामने होए. And I'm forever grateful for that part because जब वो मेरे घर आई तो like it was the first time that she visited my house after like all of that. Yeah. मतलब वो she was really happy and I was so excited to see your house and your married life. To see my house, yeah. And like even when she passed away तो I was going through her phone तो सबके folders बने हुए हैं, Izzah's house, Samira's house. Cute, और वो पूरी videos like एक corner में selfie है एक चीज़ के साथ, और वो forward भी मैं WhatsApp पे देख रही हूँ कि हर एक को की हुई हैं. That's how she was. और WhatsApp status लगे हुए हैं और सारा, which was like really cute. And but that was just my mom's way of loving me. She was obsessed from me. Like
मतलब फेवरेट तरीन थी मैं उनकी इस दुनिया में. बट खैर, बैक टू द इंट्यूशन थिंग, आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, लाइक आई ड्रैग इट बट आई कट इट शॉर्ट. खैर, I was in Dubai. I had to get this exact same process done. जब उनकी तबीयत तब बिल्कुल ठीक थी. She was shifting the house, walking, talking. Mother's Day गुजरा था, perfectly fine. सब कुछ फिट जा रहा है. Doctors are like, wow, she'll do so much better now, and we are so happy. आपने जिस तरह इनका ख्याल रखा. तो मुझे FIA ने रोका कराची एयरपोर्ट पे पहले, because I didn't get the protector की stamp. Like you also got it, and I'm sure before you were coming here. Somehow I spoke to them. I was like कि मैं मिस नहीं कर सकती. I have to cover an event as well when I land. तो they allowed me. फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं आई तो मेरा मेडिकल का रिजल्ट जल्दी नहीं आया. प्लस माई एजेंट एट दैट टाइम डिडंट टेल मी कि आई कैन नॉट लीव द कंट्री. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम dealing with Dubai या ये protector वाली चीज़. You can't leave the country until you're biometric. Exactly. So उस चीज़ में I had to cancel my visa. It takes 2 days to cancel the visa. जब मैं टर्की जाने लगी to cover like next batch of events, तो मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने साइड पे बिठा लिया. कहते ये तो आप इलीगल काम कर रही हैं, you have to like cancel your visa. फिर खैर आई यूज़ माई वन लिंक जो मैंने बहुत दुबई में रखा हुआ था कि आई यूज़ इट जब पता नहीं कोई मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा यहाँ पे कोई मसला हो जाए. आई कॉल्ड दैट पर्सन एंड आई वाज लाइक ही वर्क्स वेरी क्लोज विद द ही इज़ लाइक बेसिकली समझ लो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही एक तरह से. एंड देन ही वाज like are you sure you want to cancel your visa because you'll waste a lot of money. But then I was like I'll rather waste money because मैं clients को क्या बोलूँगी. मतलब they hired me and I should be there is a signature package. तो अल्लाह ताला ना मुझे रोक रहे थे हम ना कि मत जाओ आगे. Yeah, things kept happening that things kept barriers happening, and obstacles आए जा रहे होते रहे. और जब मैं लैंड की हूँ I struggle with Turkish people a lot. Like जब भी मैं वहाँ जाती हूँ I struggle. क्योंकि वहाँ एज अ टूरिस्ट जाना बहुत डिफरेंट है बट काम में दे आर वेरी डिफरेंट. ठीक है. इस टाइम इस दफ़ा हम ना मेरा दिल लाइक मतलब कुछ था. देर वॉज लाइक शुरू में कहती थी कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ बट देर वॉज सम रियली बैड एनर्जी. देर वॉज समथिंग लाइक मतलब मेरा बस नहीं चल रहा था कि मतलब it was that bad. मतलब पूरा इवेंट आई वॉज मिजरेबल एट नाइट्स इन द मॉर्निंग. खाना नहीं खाया जा रहा, कुछ हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है. फिर ऑन द 4th आई टोल्ड यू दिस थिंग पहले भी. I was sleeping in the middle of the night and मैंने पोनी की हुई थी स्क्रंची एंड somebody like किसी ने मुझे धक्के दे के उठाया कि उठो वापस जाओ. और मुझे लगा कि मे बी इट्स ज़ारा या बुशरा बिकॉज अगले दिन लोगों ने ग्रैंड बाजार जाना था मेरे साथ और मुझे लगा सुबह हो गई है तो अब मुझे ज़बरदस्ती उठा रही है और मैंने इनको डिच करना था जाने से पहले. So you're fully sleeping, someone woke you up. Yeah. And then और वो इतनी ज़ोर से हुआ कि स्क्रंची उतर गई है. अब सोते हुए तो नहीं ना उतर सकती, कुछ जर्क होगा तो वो उतरेगी ना. और मैं उठी हूँ और वो मेरे यहाँ पे लटक रही है. मैंने देखा है, मुझे गुस्सा आया है, मैं बुशरा है या ज़ारा है एंड बोथ ऑफ देम आर स्लीपिंग. और फिर मुझे लगा भी है कि अभी लोग नाटक कर रही हैं. तो फिर मैंने ज़ारा का फेस देखा, बुशरा का फेस देखा. वो सोते हो तो थोड़ा स्वेलिंग हुई होती है, पता होता है. हाँ. तो दोनों सो रही हैं एंड देन आई एम लाइक व्हाट द हेल इज दिस होटल हॉन्टेड, व्हाट इज रॉन्ग. एंड आई मैसेज्ड माय हस्बैंड राइट अवे ऑल्दो उस टाइम पे कभी जाग नहीं रहा होता एंड ही वाज अप एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो बट समथिंग और समवन इज टेलिंग मी टू कम बैक. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्योंकि 7th तक 6th तक मेरा काम था, बीच में एक हफ्ते का गैप था, फिर 12, 13, 14 मेरा शूट था. तो मैं इसको ये कह रही हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए वापस आ जाऊँ. तो कहता है कि इज़ा लाइक डोंट थिंक नेगेटिव, लाइक यू तुमने यूरोप जाना है बिकॉज माई कज़न वॉज प्रेगनेंट एंड माई मॉम रियली रियली वॉन्टेड मी टू विजिट हर इन जर्मनी. तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम टर्की से चली जाना, 2 घंटे की फ्लाइट है, गो मीट हर, उसके पास कोई नहीं. एंड माई मॉम लव्स दैट कज़न ऑफ लव्ड दैट कज़न ऑफ माइन. और मेरी कज़न से बात भी हो रही है, अच्छा ये फ़्लाइट लेनी है, इस तरह आना है ये वो. तो मेरा माई हस्बैंड इज़ लाइक नहीं, यू शुड गो टू यूरोप, मतलब यू आर लकी दैट यू हैव एक्टिव शेंगन, जाओ घूमो, मतलब तुम क्या करोगी वापस आकर. मैं इसको ये कह रही हूँ कि देख लिया मैंने दुनिया, और गुस्से में उसको कह रही हूँ कि ये क्या बात है, पिछला पूरा साल आए, मतलब मेरी नहीं है लिस्ट में कि मैं अब यहाँ भी जाऊँ वहाँ भी जाऊँ, मतलब जो मैंने देखना था मैंने देख लिया, बट आई शुड कम बैक होम. And he's just telling me कि maybe this is your negative thought. And then I wrote something which still scares me whenever I go through that exact conversation. I said that, I don't know what's happening on 8th, but I should be home on 8th.
एंड देन That's just insane. मतलब एक डेट है ना, वो मेरे दिमाग में बैठी हुई, मुझे नहीं पता 8th को क्या, मतलब 9th भी मैं कह सकती थी, 10th भी कह सकती थी, बट आई स्पेसिफिकली रोट दैट डेट. एंड देन ही केप्ट टेलिंग मी कि काम डाउन, नो इट्स ओके, लाइक तुम आओगी जाओगी. तब फ्लाइट्स भी वर लाइक, इकोनॉमी वाज लाइक 3 लाख रुपीज़. तो मतलब, और दूसरी बात ये, मैंने ये भी बोल दिया हमना कि जो मेरा अगला क्लाइंट है, मैं उनको भी कैंसिल कर रही हूँ, मुझे नहीं करना उनका इवेंट कवर. मैं उनको बता दूंगी बिकॉज दे हैड अ वेरी ग्रेट टीम ऑन बोर्ड, बस मैंने उनकी कैंडिडेट्स करनी थी. एंड द क्लाइंट वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग टू. और मेरी उससे इस बारे में एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी कि मतलब ये जो एक बीच में गैप आ रहा है, अगर इन दिनों में मेरे इवेंट्स नहीं जाते तो शायद लाइक मतलब मे बी आई माइट कैंसिल यू. तो शी वॉज ओके विद दैट पार्ट इज़ वेल. खैर देन आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अगर यहाँ रहना है. फिर बुशरा की नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो मैं उसको पहले भेजने लगी. बट फिर मेरी अम्मी से भी लास्ट बात हुई, तो अम्मी ने भी यही कहा कि नहीं, तुम बुशरा को रख लो, तुम्हारा कभी वॉलेट गुम हो जाता है, कभी क्या गुम हो जाता है, हर वक्त तुम केओस में रहती हो. So it's good to have someone with you. जस्ट उसको रखो, खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो तुम्हारे साथ कोई है तो सही ना, मैं तसल्ली में रहूँगी. Right. एंड देन आई वाज लाइक अच्छा चलो लेट्स मेक हर मिस हर फ्लाइट. बुशरा को लेके मैंने कहा, इस्तांबुल में तो हम रह नहीं रहे हैं, let's go to Alashate. It's one of my favorite places on this planet. So you wanted to go there? Yeah, and then we had to rent a car. Car rental में 2 घंटे लगते हैं, उस दिन 8 घंटे लगे. Allah Ta'ala was just giving signs, stay in Istanbul, and we were just like ignoring that. जो रास्ता है वो 5 घंटे का था, 5 घंटे की बजाय पता नहीं हम 8-10 घंटों में पहुंचे, because we took like a wrong turn. Everything that could possibly go wrong was going wrong. We reached Alashati and वहाँ जाके we were locked out of our villa. Again, everything that was going wrong. Allah was just giving me so many signs. And every morning when I wake up, I call my mom. And that day, उससे एक रात पहले मेरी अम्मी का थोड़ा पाँव मुड़ गया था. तो जब भी कुछ ऐसा होता है, like all my friends know this thing कि I was very protective about my mom. कि मतलब अगर मैं वहाँ नहीं हूँ, जैसे अगर उनको कुछ हो रहा है मेरे होते हुए, तो I am answerable कि दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्यों क्या हो रहा है, मतलब मुझसे पूछेंगे तो मैं दे सकती हूँ जवाब, बिकॉज आई नो कि मैंने अपनी कैपेसिटी में सब किया होगा. बट मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं करती थी, ऑल्दो वो बेचारे भी सब कुछ कर रहे होते थे, स्पेशली लाइक विद माई डैड. तो मतलब मैंने अपने अब्बा को बहुत तंग किया हुआ है इस मामले में, बहुत ज़्यादा. और टू द पॉइंट कि मेरी अम्मी मेरे से बातें छुपाती थी, क्योंकि उनको होता था कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो ये बस अपने अब्बा को नहीं छोड़ेगी. हालांकि वो बेचारे सारा टाइम उनके साथ उनका ख्याल रख रहे होते थे. खैर उनका पाँव मुड़ा तो इन सब ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि उस मैडम को नहीं बताना जो टर्की में है, बिकॉज हम सबकी क्लास होगी. And then I called my mom and my mom did not pick up. It was my dad and I was like, put my mommy on the phone. फ़ोन अंदर लेके गए हैं तो म्यूट हुआ है. मैं मेकअप कर रही थी तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा शायद गलती से हुआ है. अम्मी ने उनको बोला है कि मैं एक्टिंग करती हूँ कि मैं सो रही हूँ कि मेरा फेस वाला है, इसको शक हो जाएगा. एंड देन उन्होंने फ़ोन किया, कहते देखो मम्मा सो रही है ना. एंड देन शी इज़ जस्ट लाइक एक्टिंग कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हें मैंने इतनी दफ़ा कहा है, तुम खुद अपनी दफ़ा कहती हो कि पहले मैसेज करके फ़ोन किया करें, क्योंकि मैं अक्सर काम पे होती हूँ, डायरेक्ट फ़ोन आ रहा है, कोई टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड हो रहा है तो फ़ौरन इन द वीडियो कहती है. तो तुम मतलब खैर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना, इस तरह करके कहते हैं. आई एम लाइक इनको क्या हुआ है, मतलब ये तो हमेशा लाइक शी इज़ रेडी टू टॉक टू मी. फिर क्या मेरे अब्बू से मेरी 10-20 मिनट बात हुई. एंड देन वी वर लाइक जस्ट हैंगिंग आउट इन अलाशाते. हम चश्मे गए, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ. और पता नहीं फॉर सम रीज़न हम ना उस दिन मेरी पॉकेट में मेरा फ़ोन था, वो डू नॉट डिस्टर्ब पे लगे कभी, हालांकि मैंने अपना पर्सनल फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं लगाया. और फिर मेरी अम्मी की मुझे 2-3 कॉल्स आई हैं, बट मैंने पिक नहीं की. मैंने कहा चलो घर जाए करती हूँ ना. फिर घर जाके मैंने 3-4 दफ़ा कॉल्स करना शुरू की हैं, बट उन्होंने पिक नहीं की. लाइक जब वो मुझे कॉल करती थी मैं पिक नहीं कर रही थी, जब मैं उनको कॉल करती थी तो वो मुझे पिक नहीं कर रही, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी. फिर माई कज़न वॉज एट आवर हाउस. शी वॉज बेसिकली सिटिंग विद माई मोम. वैसे ही पता चला मामी का पाँव मुड़ के. मेरी पुप्पो भी आई हुई थी, तो उनसे बातें कर रही हैं. और मेरी कज़न से मेरी बात तो नहीं है, बट आई न्यू दैट शी वॉज एट माई हाउस. अब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हु टोल्ड मी, बट माई सिस्टर टोल्ड मी. तो मुझे था कि चलो ठीक है ना, क्योंकि तब भी मुझे लाइक फील हो रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, बट तब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. फिर खैर इन द मिडल ऑफ द नाइट इट वॉज 3 AM एंड I was like just talking to my friends and all. And there was one more thing that happened that night which I think I didn't tell you.
उस दिन ना स्ट्रीट में कोई क्राइम हुआ था जिसमें वो हर एक अपार्टमेंट से एक एक बंदे को पुलिस लेके जा रही थी टू लाइक चेक के, अब हमें नहीं पता क्या क्राइम हुआ था, कि पूछताछ के लिए ना। अच्छा। अब मैं और मेरी दोस्त बाहर बैठे हुए हैं और हम ना हर अपार्टमेंट से वो एक एक बंदे को बाहर बुला के प्रॉपर लाइक पूछताछ कर रहे हैं, और मैं और मेरी दोस्त बाहर बैठे हुए हम देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। वैसे दैट एरिया वाज लाइक सुपर सेफ। एक पुलिसमैन आ रहा है मेरी तरफ और मैं बस दिल में ये दुआ कर रही हूँ कि यार मतलब, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट आई एम जस्ट प्रेइंग कि मत आइए मेरे पास। वो मेरे पास आया लाइक लिटरली एक स्टेप दूर है, ही लुक्ड एट मी एंड माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड अवे, और वो चला गया। और वो बाकी एक एक बंदे को लेके भी गए हैं। तो सोचो लाइक अगर चाहे मेरी गलती ना होती, लेके जाते इन्वेस्टिगेशन करते, पता नहीं उन्होंने क्या पूछना था, क्या क्राइम था, क्या हुआ था, बट उसके आधे घंटे के बाद माई मॉम पास्ड अवे। तो अगर वो मुझे या बुशरा को लेके जाते तो हम वापस कैसे आते। तो अल्लाह ताला बचा भी रहे थे और मुसीबत में डाल भी रहे थे और कह भी रहे थे कि मतलब he was constantly having your back. Yeah, he was like constantly like just यहाँ तो इस्तांबुल में रह जाती, करनी भी तुमने अपनी मर्जी है, तुम हो लाइक मतलब अल्लाह ताला ने इतना मुझे सिखा दिया, इतना ट्रैवल कर लिया है कि बाहर जाके कोई भी मसला हो जाए, आई कीप माई सेल्फ लाइक टुगेदर। तो खैर पर वी वर जस्ट टॉकिंग एंड माई सिस्टर कॉल्ड मी। मैंने उसने एक दफ़ा कॉल की, मैंने कट की, दूसरी दफ़ा कॉल की, मैंने कट की, क्योंकि मुझे पता उसके सैलून के कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, स्टाफ के, स्टॉक के, या वैसे ही ओनर कभी क्या तंग कर रहे थे। यू नो हाउ बिजनेसेस आर इन पाकिस्तान फॉर वुमेन। तो मैंने कहा कि अभी मैं इसका कोई मसला नहीं सुन रही, कल बात करूँगी। या सो शी कॉल्ड मी अगेन, आई पिक द कॉल एंड शी सेड इज़्ज़ा मामा फोत हो गई हैं, एंड शी एंडेड द कॉल। And now I'm like what does one do after a phone call like that? No, but for me it was just like maybe it's my negative thought, and the next thing that I did was, this is not real, denial. Yeah, no, I thought that this is my head, I never picked a call. It's a thought. So I messaged my mom and I said, I'm so sorry, I don't know, like I remember like I said, I hope it's not true, but if it's true, I'm so sorry that it happened to you. Because for the fact, उस टाइम पे वो यही चीज़ है कि अब वही बात है, हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है टू अ सिचुएशन लाइक दिस. फॉर मी, आई डिड नॉट इवन थिंक वंस अबाउट माई सेल्फ, बट ऑल आई न्यू वॉज दैट माई मॉम, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो एंड शी वॉन्टेड टू लिव फॉर अस. और मुझे बस यही था कि यार हम शायद रह लें, वो कैसे रहेंगी हमारे बगैर. हमें नहीं पता कि डेथ के बाद क्या होता है. और मैंने तो कभी इस चीज़ के बारे में ना सोचा, ना कभी कोई इतनी क्लोज डेथ ही ना देखी. आप मतलब मुझे तो अम्मी की डेथ पे पता चला कि आप सीधा जन्नत में नहीं जाते, आप बरज़ख में जाते हो पहले. लाइक यू नो ऑल दोज लिटिल डिटेल्स दैट आर मतलब इस जो होती हैं अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, लेकिन आपको वो तभी पता चलेंगी व्हेन यू विल डाई योरसेल्फ, एग्जैक्टली क्या होता है. नोबडी नोज. और मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक, so you were like worried about your mother. I was like okay, so that is where that वो जो मेरे अंदर एक कंट्रोल फ्रीक था ना, that was the first slap on that. No, now you cannot babysit her. Because for me it was not like I got a call that oh like you're a mom yourself. My mom lost her mom when I was like what 10 years old, and उस टाइम पे मेरे मामू, my मामू got murdered when she was pregnant with my sister. Okay. तो फिर my दादी passed away, फिर my नाना passed away, so और फिर उनकी my mom's sister passed away, so she had nobody. और फिर आई रिमेंबर लाइक वो बस जब मेरी नानी को याद करके रोती थी तो मैं उनको नई तकलीफ में देख सकती थी. सो वन फाइन डे आई टोल्ड हर दैट लिसन, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स आई एम योर मॉम. What can you expect from an 11 years old to react in a situation like that? And I didn't say it like अच्छा बस ये मैं कह रही हूँ. हम ना वो यही बात मुझे बार बार रिपीट करते कि तब तुमने मुझे कहा था और वाकई तुम, I lost my mom, don't be my mom now. I was actually her mom in a way कि हाँ बस शायद मैंने अपनी अम्मी को पैदा नहीं किया था, उसके अलावा लाइक हर चीज़ में जिस तरह माय नहीं होती कि अच्छा ये क्यों कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं, लाइक मतलब जैसे अम्मी ओपिनियंस देती हैं लाइक जनरली शादी हो जाती है जब बेटी की, तो आई वॉज लाइक I also used to give her opinions on how she should like act with my dad and how my dad should act with her. मतलब वो यही कहती थी कि what is wrong with you, like are you like मतलब. और मुझे ऐसा लगा कि
I'm not a mom yet, so I don't know that feeling. But I felt like I lost a child. और मुझे ये था कि यार मतलब अब मैं क्या करूँगी. Like I was just telling my sister even today कि वो मुझे कह रही थी कि तुम denial में हो, क्योंकि रात को I always call them because I get scared. तो मुझे ये कहती है कि तुम अल्लाह की रज़ा नहीं मान रही हो. तो मैं कैसे मानूँ यार. मतलब I lost my child, I lost my mom. I love my dad with all my heart, but our dad lived away from us all his life. तो she was like also playing all the dad roles as well. तो मतलब अभी वो चाहते हुए भी, मतलब मुझे पता है कि जो अब्बास के करने वाले काम होते हैं, ना चाहते हुए भी वो मेरी अम्मी को करने पड़े, क्योंकि वो दूर रह के हमारे लिए, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे थे. बट इट वॉज नॉट ईजी. तो अभी मतलब दिस वॉज समथिंग दैट ऑल माई सिबलिंग्स अंडरस्टूड, बट आई डिडंट, बिकॉज आई ऑलवेज सॉ माई मॉम. तो आई नेवर, मतलब मेरा उनके साथ, मतलब मैं चाहते हुए भी लाइक उस तरह से उनके साथ ओपन अप नहीं हो पाती थी या हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज केप्ट माई मॉम हेयर. तो मतलब बस मुझे वो बहुत लाइक एक वो फीलिंग थी, एंड आई जस्ट केप्ट हिटिंग माई हेड फॉर द नेक्स्ट 5 hours बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट इन माई कंट्रोल. और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ यार. मतलब व्हाट कैन आई डू लाइक. और फिर वही बात है ना, मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, ऑब्वियसली दे ऑल्सो डिडंट नो कि वो क्या कहें, वो क्या ना कहें. प्लस जहाँ पे हम थे वहाँ so glad to know that you weren't alone, Izzah. Like yeah, that you had people around you. It that is something that I'm also forever thankful for. But खैर we had to take a flight, but उसके लिए हमें पहले रोड ट्रिप करना था. एंड दैट साइड इज़ वेरी प्रिटी. हम ना लाइक एक तरफ आपको ग्रीस के आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं. इट्स अ वेरी स्टनिंग प्लेस लाइक इन टर्की. और साथ साथ समंदर है, रोड्स हैं, पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी है, और यू आर लिटरली इन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन योर वर्ल्ड. एंड देन अ न्यूज़ लाइक दिस, और रोड है कि ख़त्म नहीं हो रही, और आपको लग रहा है कि आप भी शायद इस दुनिया में ज़िंदा नहीं हो. एयरपोर्ट पे पहले एक फ़्लाइट, दूसरी फ़्लाइट, तीसरी फ़्लाइट, फिर लाइक ऑब्वियसली आई डिडंट गेट अ डायरेक्ट फ़्लाइट. Thank God my friend who is also my travel agent, Shams, I'm forever thankful, because अगर वो ना होता तो शायद मैं अम्मी के जनाजे पे भी ना आ पाती. He was up, he did everything, my friends packed my bags. और पूरी फ़्लाइट I was just praying this one thing that लोग अपने सब्र की दुआ करते ना कि अल्लाह मुझे सब्र दे. मेरे मुँह से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि शायद मुझे सब्र आ जाएगा, शायद, मुझे नहीं पता कि क्या होएगा, बिकॉज आई एम इन दिस सिचुएशन फॉर द फर्स्ट टाइम. बट अल्लाह जस्ट मेक श्योर दैट शी इज़ ओके ओवर देयर, एंड आई वांट टू सी साइंस दैट शी इज़ ओके, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक ओ आई एम जस्ट प्रेइंग और वो ठीक होएंगी और मैं इत्मीनान में होंगी. अगर आपको मुझे सुकून देना है, जस्ट मेक श्योर दैट यू शो मी दैट शी इज़ गोना बी फाइन अप देयर, एंड यू विल टेक केयर ऑफ हर. ऑल्दो आई नो दैट यू लव अपने बंदे 70 माओ से भी ज़्यादा, बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो दैट इफ़ यू आर गोना टेक केयर ऑफ माई मॉम. इट वॉज जस्ट लाइक पता नहीं क्या यार. मतलब इट वॉज, आई थिंक इट वॉज माई बिगेस्ट फियर, एंड इट हैपेंड. Yeah, so my biggest fear was that I'm not at home or in the country and something will happen to my parents. And it was like when my dad had a heart attack, so I had to drive 5 hours to reach the hospital. तो वो बहुत मुश्किल था. तो फ्लाइट्स बचपन से ही मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि मैंने दुनिया घूमनी है. वो कहती थी ठीक है, वर्क हार्ड एंड देन गो. तो आई वॉज लिविंग माई ड्रीम, बट विद माई ड्रीम देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. वो चीज़ें मुझे स्केयर करती थी और वो मेरे फियर्स भी थे. और वो यही बात होती है ना, ख्वाब देखना बहुत आसान होता है, जब उनको आप पूरा कर रहे होते हो, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड विद दैट यू हैव टू गो थ्रू. If I lived my dream and if I am a destination wedding photographer, I can also not forget the fact that I was not like in the country when this happened. वही बात है, if I am Picture Izzah today and I have like a lifestyle or whatsoever जिस पे लोग बहुत खुश होते हैं देखते हैं, people should also know that if I was like just a girl as a housewife at home, तो शायद ये न्यूज़ मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट तरीके से होती. जो ये ट्रॉमा मैंने पूरी ज़िंदगी अब अपने साथ लेके चलना है, of that how I found it, because ये चीज़ आपको बहुत डराती है. Nothing comes easy. Yeah, nothing comes easy. But at the end of the day, you know, it's everybody's situation is so different, right? Yeah. Like somebody could not be, you know, what I'm saying is that, you know, all these factors, these
scary things that happen, or you're scared that they might happen, but there's a chance that they might not happen as well, right? And you can't, you still have to do certain things, follow certain dreams. And it could be like what I meant by saying that har kisi ki situation different hoti hai. It's that somebody could be around their family, have be always there, but still something else could happen that they don't expect, right? Like I said, because Allah Ta'ala has his own ways and his own, you could have very well been in the country, but this was just how it was meant to happen. And when you talked about the intuition thing, the feeling thing, and how you thought at that time that it was your negative thinking or it was your negative thoughts, but I really, really, really believe in intuition. And I do know that there is, because we take ourselves, the idea of the temporary world, and we take our physical selves very seriously. However, we tend to forget that we're actually souls having a physical or human experience. We're not actually humans. Right? So we are actually souls having a human experience, and those souls are your inner voice. They are your higher self, and they know things that we don't know, that your human form, your physical form doesn't know. And I say कि वो अल्लाह ताला की आवाज़ होती है, and वो आती है और वो हर वक्त होती है. It's always there. It's just how much we are sort of connected to our inner self, connecting to our inner self, listening to it, tuning into it. And this incident that you mentioned where something woke you up or something happened, it has happened to me many times in life as well, where like how did this sort of happen? Something I've even heard my name ऐसे करके, in moments where I was supposed to wake up or do something, or a sound in my, usually it happens in my left ear. So and I've learned to identify the intuition, or that it's my inner self, or this is not a vahem, or this is not overthinking. And one of the best ways that I've learned to identify, and I recently saw a video that reaffirmed this as well, is that so for example, when you are faced with a situation or a you're at a crossroads, or when you don't know what to do in your life about something, you can actively think about it, right? Should I do this? Should I not do this? And with your logical mind, you will be thinking about doing it or not doing it based on whatever factors. And sometimes you can be like, okay, am I just overthinking it, or is this my negative thought or is this a feeling? And the way to sort of identify if it's a gut feeling or your intuition or just your active thinking or your mind or your anxiety is that where does the thought start? So, if it's right there. If the thought begins when you actually, from your brain, when you thought about it, when you were weighing the pros and cons, or you were overthinking, or it was your anxiety saying, what if this happens? What if that happens? Should I do it? Should I not do it? Should I go back? Should I stay? Right? Or it starts in your body. It's coming from somewhere over here or here, or it starts in your body, or it's just a feeling, and you can't rationalize it much, but it's a feeling, and it's starting here and ending here. Is it starting here or ending here, right? Or is it a thought, an active thought that gave you anxiety, or it was a feeling that's turning into a thought? So identification of that can, I think, really help you understand whether it's your intuition. You shouldn't do this. Like, I have a bad feeling about this. I shouldn't do this. Has happened to me many times in my life. And I think it's sort of a current as well. कभी-कभी आपको body में like वो एक feeling चलती है from your feet to like your head. Yeah. Once in my life, I had this really nice collaboration or partnership opportunity. Not collaboration, but a business partnership opportunity. And I consistently had a bad feeling about it. When you looked at it on paper, it was perfect. It was the best it was the best business partnership. It was like, why wouldn't you do it, Hamna? Like, everything is perfect.
you do this, चांदी लग जाएगी, you know, you're sorted. Do it, like it's good for your business, it's good for your you know, finances, good for your life. But I just had this bad feeling. Every time I would have to go into a meeting for that, I would just didn't feel like it. दिल नहीं चाहता था, मज़ा नहीं आता था, और मुझे लगता था यार ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या सीन है. And I told my husband so many times, like, I have a bad feeling about this. And then later that situation, but I still went with it. I didn't listen to my intuition, and that situation just imploded. It was such a mess later. There were issues, contract में मसले थे, dishonesty थी, बड़े problems थे. So you know, like, there's just some things like, so, and every time I have ignored my intuition, I have regretted. Yeah, same. If you feel, but no matter how much sense it's making, and the thing is, the more in tune you are with yourself, the more you can feel your intuition as well. Like, if you are open to listening to that voice, it's there and it's telling you. I think negative thoughts जो मुझे लगता है जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वो मेरे thoughts हैं, वो तो वही होंगे जो मेरे इंट्यूशन से लिंक्ड होंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही तब ना जब कोई इंट्यूशन वाली चीज़ आगे बॉडी में डेवलप हो रही है, एंड देयर इज समथिंग. वरना अगर कोई चीज़ परफेक्ट है तो उसमें आपको क्या मसला नजर आएगा. यस, सो मतलब जो मेरी पहली फीलिंग होती है किसी भी चीज़ के बारे में, आई अग्री टू दैट. बट अब इफ इट्स बैड देन इट्स बैड. मतलब मैं फिर उस पर अब कोई, मतलब फ्रॉम द लास्ट 2 months ऑब्वियसली व्हेन आई गॉट बैक टू वर्क, तो आई हैड टू टेक लाइक a lot of business decisions, and काफ़ी चीज़ें complicated थी within my company and all, क्योंकि technically my team didn't force me to come to work from the last 6 months. अम्मी के टाइम पे भी बहुत चीज़ें upside down थी, but I just went for like the first feeling that I got when I was like taking or making my decisions, and I think I did pretty well, alhamdulillah, in that. और जिस चीज़ में मैंने नहीं सोचा, that thing went wrong in every possible way. Like, I think somewhere, you know, in our subconscious mind, somewhere in our body, we know when something is not really flowing with us. And that goes for people as well, Hamna. With people, so when you meet people, there is this energy. So I believe in auras a lot. मतलब अगर energy नहीं match हो रही है तो नहीं हो रही है. मतलब एक टाइम पे तो मैंने इस पे इतना करना शुरू कर दिया था कि जब मेरे कुछ दोस्त थे जो मतलब नेगेटिविटी लेकर आते थे मेरी ज़िंदगी में, जब मैं उनसे मिलती थी, I love them with all my heart, and I told them that listen, maybe तुम अपनी energies भी change कर सकते हो आप. Of course. Like if there is something toxic about someone, और या वो कोई एक बात बार बार repeat कर रहे हैं and it is like bugging you, you can just tell them, because वो उनके अंदर एक चीज़ built in है, उनको नहीं realize हो रहा कि how this thing is affecting you. Whenever they meet you, they're repeating the same thing over and over again. So I do confront people. या मुझे वैसे ही पता चल जाता है कि अब मेरा energy level उस इंसान से मैच नहीं हो रहा. सो बट टर्की के बारे में पता है, वैसे अब मैं सोचती ना, मुझे टर्की के बारे में फीलिंग शुरू से आती थी, ऑल्दो आई स्टिल वर्क देयर एंड ऑल, बट कुछ था. एंड आई रिमेंबर हम ना, ये भी लाइक नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई वेंट टू अला शाते बिफोर, दैट इज़ वाई आई टुक माई फ्रेंड्स देयर. और आई रिमेंबर टेलिंग माई फ्रेंड माविक, वी वर लाइक 18 years old, लाइक वो मेरा सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप था. तो फॉर टर्की वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ मेरी अम्मी ने मुझे भेजा था, अलाउ किया था एज अ टीनेजर. आई वॉज 16 एट दैट टाइम, अपने ओन पे विद आइजैक, ठीक है, जो उनकी वो इंटर्नशिप्स होती हैं कि यू नो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू शुड लर्न एंड ये वो, एंड लाइक ये लोग थोड़े टफ भी होते हैं, सख्त भी होते हैं, बट यूल बी लाइक यू नो यूल ट्रेन योर सेल्फ वेल. इट वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ मैं गई. फिर अला शाते में उससे अगले ट्रिप पे गई, एंड आई रिमेंबर टेलिंग माविक के ये जो जगह है ना, मुझे इससे मोहब्बत है, लेकिन मुझे आई लव दिस प्लेस, बट आई एम ऑल्सो, मुझे ना कुछ डर भी लगता है इस जगह से. एंड दैट वाज लाइक सो मेनी इयर्स अगो दैट आई डोंट नो, बट ये जो जगह है, ये जो स्ट्रीट्स हैं, somewhere you know, because that's what I'm saying, our physical human body doesn't know many things, but the soul does. और फिर इस चीज़ का मैं एक और चीज़ से लिंक देती हूँ. नाउ दिस इज अगेन लाइक, अब वही बातें, ये कुछ स्पिरिचुअल बातें होती है. सम पीपल डोंट बिलीव इन देम, सम पीपल डू. आई रिमेंबर माई नानी यूज्ड टू टेल मी कि जब आप
जब अल्लाह ताला ने लाइक कोई सोल्स बनाते हैं लाइक, या जब सोल्स बने होंगे, वी डोंट नो दैट इफ़ वी ऑल वर लाइक जो हमारे सोल्स एक साथ बने थे या बारी बारी क्या था वो तो अल्लाह जानते हैं. तो सोल को ना दिखा देते हैं उसकी पूरी ज़िंदगी. हाँ, ठीक है. और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमने इनको पहले देखा हुआ है. वो इसलिए बिकॉज आवर सोल सो देम लाइक when they were like with Allah. ठीक है. And same goes for places. जैसे मैं जब अला शाह गई तो मुझे ऐसा लगा मैंने इस जगह को पहले देखा हुआ है. This feels like something that I know. और एक डर भी है, खौफ भी है, but I love this place and I know that I'll come here again. And I told my parents that I want to get married there, but of course like things did not work out. But that specific place, like I was like, I want to get married here. This will be like, because I love this place and now I don't want to ever go there again. I understand. But इतने ज़्यादा लाइक वही बात है कि अब मैं तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम बस ये दुनिया मजाक है और हमने पता नहीं किन चीज़ों को सीरियस लिया हुआ है. एंड वन थिंग एंड लाइक यूर मतलब वही बात है ना, यूर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. मुझे लगता है दुनिया में भी दो तरह के लोग हैं. पीपल हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, वो अपने ऑन में चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आम लोगों की तरह नहीं है. एंड देन पीपल who don't know what that's like. Yeah, I think life is so different after this. So there are two worlds within this world as well. People who lost their loved ones. Yeah. And people who are with their loved ones. Yeah, that is so true. Because I think the way that your perception towards life and people switches and changes after you lose your loved ones, you can't even explain how your inner world, everything inside of you, everything that you've thought and known and believed and felt just switches. Yeah. And I feel like just you and I are in the same world, and so is Valia, because she also lost her dad when she was young. Yeah. Or maybe like some other friends of mine, because they know how I will feel on my first birthday after that. How will I feel after every single achievement? How will I feel when I'll have a kid? Yeah. They know that. Yeah. And the way you messaged me, or the way Valia messaged me, and the way like जो मेरी दुनिया के लोग हैं, क्योंकि अब मेरी दुनिया वो दुनिया नहीं है जो बाकी सबकी दुनिया है. Yeah, it was like I know, like it was I know what just happened to you. Yeah. So and again like the way we do things and the way I'm not saying कि we के वही बात है कि हम कोई बहुत वो एक different चीज़ करें, because at the end your life revolves around what exactly you do after losing your parent. आप उनके लिए क्या कर रहे हो, सदका, all of that. आपकी priorities बदल जाती हैं यार. Like you'll not go for like that one pair of shoes. You'll rather do some charity in that. Yeah. क्योंकि आपको पता है these are material things. Yeah. The I think for me at least the greatest was this thing that sometimes I say sometimes मुझे अपने बारे में ये चीज़ बुरी भी लगती है, but like I don't care much for material things, and by that I don't mean that I don't buy them or I don't like them. I like them. I do a lot of shopping. I invest money in a lot of material things, but when I lose them na, I don't care. So it's just like, oh, इतने पैसे तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम्हें क्या पैसों की कदर नहीं है? And it's not that. It's पैसा just तो आने जाना. I understand the temporary nature of this. It's just that I understand it. It's not that I'm ungrateful about money or material things. It's just that I know that it doesn't really matter. Yeah. And like, okay, like एक दफ़ा like I remember, and I distinctly remember one of my friends, उसकी जो है her maid just stole like a bunch of her like formal expensive clothing, बहुत सारे ना वो किसी जब गई तो किसी बक्से में डाल के अपने साथ ले गई. अगले दिन ही उठी तो the clothes were gone, and she cried a lot, right? And I was just thinking like ये मेरे साथ हुआ होता तो would have I cared? And even though I know it's a loss, I know it's money, I know मेहनत से बनता है, मैं money की value understand करती हूँ. I'm not ungrateful. It's not like अच्छा बहुत आसान है. I get it, but I also understand कि ये बहुत temporary चीज़ है. Material things से मैं attach नहीं हो सकती. I'm sorry, but it doesn't. Yeah. Because you know how it feels to actually. Yeah, and some people might think it's because maybe you have too much money, na, तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता. It's not that. It is not that. Like I know I can't make people understand this, but it is really not that.
बिकॉज यू नो कि असल जो लूज करना किसी को या किसी चीज को होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फील व्हेन यू लूज लाइक या मटेरियल. और मुझे लगता है पैसा एक ऐसी चीज है कि जितना आप उसके बारे में सोचोगे ना वो दूर जाता है. हाँ, That don't is care so about true. just don't care about like अब वही बात है, people are gonna be like ये देखो दो privileged औरतें बैठ कर पैसों के बारे. It's true. मतलब मैं I come from a family जहाँ हमने बहुत बुरा टाइम भी देखा हुआ है, and even in that time we never thought about the fact that ओ काश पैसे होते तो आज लाइफ ऐसी होती. तब भी my mom really kept us grounded in a lot of ways. हाँ, मेहनत करनी है, that is one thing, but it wasn't never really like कि ओ मतलब जो जिस हाल में सब्र शुक्र किया है, लोगों के पास उससे बेहतर है, good for them, happy for them, but ये नहीं है कि बस अब सारा टाइम हाँ इसके पास क्यों है, उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है. The thing is that money and material, I feel what I meant was that it shouldn't be taken too seriously. It can come, it can go. Don't celebrate it if you have too much of it. Don't you should be grateful, yes, because I feel the more grateful you are about something, the more you get it, but don't celebrate it if you have too much of it, or don't you know dwell if you don't have enough of it, because again like इसमें भी वही बात होती है कि अल्लाह मियाँ is so abundant that there is enough money for everyone in this world, लेकिन हर किसी का रिस्क लिखा हुआ है. तो अगर आपके रिस्क में नहीं लिखा हुआ तो वो नहीं आएगा, और अगर वो लिखा हुआ है तो आप जितनी भी कोशिश कर लो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए वो पैसा आपके पास आ जाएगा. एंड आई स्वेयर टू गॉड दैट हैज़ हैपेंड टू मी सो मेनी टाइम्स. इज़ इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने अभी रोका है पैसे को अपने आप से आने से, बट in the sense that so many times what happened with me was with us is that we've taken some really bold risks and steps, like for example this move and everything. We don't know if we'll ever be able to you know make money over here. क्या बनेगा क्या होगा, अभी तो हमारा कुछ setup नहीं है, but things have, but just because of that faith, that risk लिखा हुआ है और अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा. अल्लाह मियाँ will sort it out, like not making money such a big deal in our head कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा. एंड वाकई में हो गया. लाइक किसी की कोई पुरानी पेंडिंग पेमेंट थी, किसी का कोई वो डेट था, किसी का कुछ था जो कि बस जितने एन एग्जैक्ट अमाउंट, अच्छा हमारे पास इतने अमाउंट का डिफिसिट है, अब मिस्टर मिलन आई आर ट्राइंग टू फिगर आउट अच्छा हम इस डिफिसिट को कैसे कवर करें. समथिंग विल हैपन, ओ आई ओड यू दिस अमाउंट, और वो पिछली कोई 3 पेमेंट्स स्टक थी और वो इकट्ठी आ गई एन एग्जैक्ट सेम अमाउंट. वाओ. एंड इट हैज़ हैपेंड सो मेनी टाइम्स कि अब मुझे तो इसमें पक्का यकीन है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, यू कांट कंट्रोल इट. इट्स गोना कम व्हेन इट हैज़ टू कम एंड इट विल गो व्हेन इट हैज़ टू गो. हम जब यहाँ पे रिसेंटली दुबई में आए ना, तो बिकॉज दुबई इज़ सो मच मोर एक्सपेंसिव, वी आर स्टिल अर्निंग इन रुपीज़, डॉलर बेस्ड इनकम नहीं है, दिरहम बेस्ड इनकम नहीं है, बहुत मुश्किल लग रहा था. सो देयर वर डेज जिसमें ना हम कहते थे कि अच्छा ये भी नहीं करना, कैब भी नहीं लेनी, फलाना भी नहीं करना, ठीक है, हर जगह पैसे बचा रहे हैं, हर जगह पैसे बचा रहे हैं, और एंड में कुछ ऐसा होता था जिसके ऊपर वो सारे पैसे निकल जाते थे. ये हो गया, ओहो इसके ऊपर खर्चा हो गया, ये हो गया फलाना, ओहो एक कैब बचाने की कोशिश की, 3 लेनी पड़ गई, राइट. एंड दैट शोड मी दैट no matter what you do, this aspect is not in your control. And there were days where it was just like oh ठीक है, you know अब इस तरह खर्चना है और ये वो करना है, लेकिन नहीं था जब आपने, और वो पैसा, एंड what that showed me was कि अगर हमने एक कैब लेने की हमने वो की कि हमने नहीं लेनी आज कैब, या हम इतने पैसे बचा रहे हैं, लेकिन हमें 3 कैब्स पे खर्चा करना पड़ा, या जो भी हुआ, थिंग्स हैपेंड, क्योंकि वो जो हमारे पास पैसा था ना वो था ही नहीं, वो उन लोगों का था, उनका रिस्क था वो. सो इट हैड टू लीव अस नो मैटर हाउ मच वी ट्राइड, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू सेव दैट मनी, वी वर ट्राइंग टू कीप इट फॉर आवरसेल्व्स, बट इट वाज नॉट आवर्स टू बिगिन विद. सो इसी तरह क्योंकि वो इट वाज मेंट फॉर देम, तो हम उसको जितना भी संभालने की कोशिश करेंगे वो उसके पास जाएगा, एंड इसी तरह जो हमारा है वो हमारे पास
आएगा. हम ना वैसे देयर इज़ वन मोर पर्सपेक्टिव लाइक जो मैंने फील किया. कभी ऐसा होता है तुम्हारे साथ, जैसे मेरे साथ होता है कि कभी कभी मुझे कहीं से पेमेंट आती है ना, मैं वो पैसे खर्च कर करके थक जाती हूँ और वो पैसे ख़त्म नहीं होते. और कभी कभी कहीं से पेमेंट आती है, आई डोंट वांट टू डिफ्रेंशिएट, बट जैसे आज से 4 साल पहले तक शायद मैं इंटरेस्ट वाली चीज़ को कहती थी कि वो वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉर्टेज ये वो ठीक है कर सकते हैं. बट हाँ, इन दैट केस जब मेरे पास नहीं हो रहा और मुझे बनाना है ऐसे, तो मैं सारी ज़िंदगी तो पैसे नहीं जमा कर सकती. दैट इज़ वन थिंग, बट इफ़ आई कैन अवॉइड आई विल अवॉइड इट. ठीक है. सेम गोज़ फॉर पेमेंट्स. लाइक अक्सर ऐसा होता है कि किसी ऐसे चैनल से पेमेंट आ रही है, आई एम नॉट सेइंग कि अल्लाह माफ़ करे कोई इलीगल मैं काम करूँ, क्लाइंट टू क्लाइंट ही या फैमिली टू फैमिली, या मतलब ये मेरे पैसों के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है. कभी कोई पैसे आते हैं और वो टिकते ही नहीं और वो बस ख़त्म हो जाते हैं. लाइक यू डोंट नो वो कहाँ से आए, कहाँ गए. एंड फिर मैंने ना एक दफ़ा इसको ट्रैक डाउन करना शुरू किया 2020 में कि यार ये हो क्या रहा है. और you know when I looked into it, there were certain families who used to hire me. ठीक है. ऐसे अब मुझे किसी अच्छी का मैं ऐसे नाम भी ले सकती हूँ, बट लाइक खैर देयर वाज दिस फैमिली, बहुत चैरिटी करते हैं वो लोग. और वो ऐसी चैरिटी करते हैं कि वो अल्लाह ताला ने मुझे सोशल मीडिया से नहीं दिखाई हुई. जब मैं इतनी सी थी तो आई वॉज इन काबा एंड बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल जो खवातीन थी दे वर हंग्री. रोज़ा इफ्तार होना था और आई सॉ लाइक उनके ब्रांड का नाम ऑन द साफ़ा और उनके लोग यूनिफॉर्म तो नहीं पहन कर आए हुए थे, बट आई आस्क्ड देम कि अंकल वो ये पाकिस्तान वाला है. तो ही वाज लाइक हाँ बेटा यहाँ पे रोज़ सहरी इफ्तारी यही लोग करवाते हैं. अच्छा. और पूरे लाइक वो जो काबा के आउटस्कर्ट्स में जो लोग साफ़े बिछा के खाना खा रहे होते हैं, तो मतलब ना मेरी उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है. आई डोंट वांट टू नेम दैट वन बिकॉज लोग कहेंगे कि लाइक मैं बहुत लाइक आई फेल्ट सो ना प्राउड कि यार माशाल्लाह दे आर डूइंग सो लाइक मच फॉर लाइक सो. बिकॉज जो अम्मा जिसको खाना मिला वो थोड़ी देर पहले तक मेरी अम्मी को बता रही थी किस तरह ट्रैवल एजेंट ने उसको लूटा, अब उसके पास पैसे भी नहीं है खाने के. ठीक है. तो उसको खाना मिल गया, मैं उसके लिए खुश हो रही हूँ. और बड़े हो के वन ऑफ देयर डॉटर गॉट मैरिड एंड दे हायर्ड मी एंड आई रिमेंबर आई गेव दैट अमाउंट एडवांस पेमेंट की टू माई मॉम घर के खर्चे के लिए. और 3 महीने तक ना अम्मी कहती थी मैं पैसे यूज़ करी. अब नॉट दिस मेक्स नो सेंस हम ना, बट अम्मी कहती थी मैं यूज़ करी वो ख़त्म नहीं हो रहे. ऑल्दो दैट अमाउंट वाज नॉट दैट बिग कि आप 3 महीने चला लो. नाउ आई डोंट नो हाउ दिस थिंग वर्क्स, बट आई हैव सीन इट अ लॉट. लाइक इफ़ यू लाइक आपका जो भी बिजनेस है जिस तरह से भी है, अगर आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के उसमें से एक सर्टेन अमाउंट चैरिटी देखो, जितना बच जाता है वो आगे भी अगर जा रहा है लोगों के पास, उसमें भी अल्लाह बहुत बरकत डालते हैं. दैट्स ट्रू. बट बाकी these things पता नहीं हमने कितने इंटेंस बातें कर ली है. लोग कहेंगे कि क्या बातें हो रही हैं, किस जोन में है ये दोनों. बट नो आई थिंक करनी चाहिए इस तरह की बातें. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेकिंग आउट द टाइम. इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट हियर दैट्स in your mind, in your heart? I just want to add like this one thing that I keep on telling people again whenever like people are deemed to mean to me in my DMs or whatever, like यार I feel sorry for them. और अब मुझे डर लगता है. हम ना पहले I used to block people, अब मैं उनको ये मैसेज लिखती हूँ कि यार प्लीज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप मुझे बात कह रहे हो या मेरे से मीन हो रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, किसी भी किस्म का या कोई भी रैंडम मीन कमेंट और या ओपिनियन ऐसा जिससे मेरी दिल आज़ारी हो सकती है. बट अगेन आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मुझे कोई सोशल मीडिया हेटर्स का या कमेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता. बट whatever I've learned and seen from my life, जब कोई मुझे कहता है ना, मैं उस बंदे की अकाउंट खोल के लिटरली चेक करती हूँ कि यार, और मैं दुआ करती हूँ दिल से कि इसने जो मुझे बात की है अल्लाह इसको इसका कारमा ना दे. बिकॉज they can't, sometimes there are people who cannot take it. And at times you know people who I know वो मेरी कोई चीज़ अगर forward करें and they are like writing something mean on it, वो कभी कभी गलती से वापस आ जाती है. ये होता है इंस्टाग्राम पे बहुत. और फिर like by the time they realize it's gone. But I mean don't do things or say words that you don't want to hear about yourself, because whatever you say or do, it will come back to you. It does come back to you. And that is one thing I genuinely feel scared for people who like literally make fake accounts and like they think that they can do whatever hell they want because उनका नाम नहीं है ऊपर. It's literally like जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जो जादू करते हैं लोगों पे या जो इस तरह के लोग होते हैं उनके अपने घर सबसे ज़्यादा तबाह बर्बाद होते हैं. Yeah, because it's like
जितनी आप negative energy expel करोगे, it's gonna come back. So at this point, like, I literally pray for people, especially like, not just for me, like, you know that how people are on social media, and even with my friends. Yeah. So matlab, it's I mean, they can do whatever they want, but this is one thing, not just for social media, not specifically for me, like even in normal life, if you think that you're mean to someone or या आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो, बस वो ये बात याद रखें कि that is gonna come back to you, like, and और फिर जब वो आएगी तो आपको याद भी होगा कि आपने किसके साथ ये बात की थी और ये ऐसे हुई है. So I think that's a very nice thing to share. I think it's a food for thought for a lot of people to reflect. And or obviously ये बात मेरे पे भी जाती है. It's not like, oh, I am the most positive person on this planet. The least I can do is I can try to be a better person every single day. But yeah, and वही बात है कि कुछ अगर बुरा कहना है तो उससे बेहतर है कि आप चुप ही रहें. सही बात है. You don't have to say those things. It's really not going to do anything. Yeah. So Izzah, thank you so much. You're welcome. Thank you for having me. Thank you for having this very profound conversation with me. Very different from the last time we sat together and spoke on this platform. But always a pleasure having you. And by the way, these two podcasts are very like clear-cut proof of how people change and how things are not going to be same. I was a very different person with different goals and aims when I came on this podcast 2.5 or 3 years ago, and now I'm back and my life is like this. So like people can go see that one and this one and see, and you'll see and you'll know like how life changes. And that is why life is never within good times don't stay and bad times don't stay, and life is always like and we'll this. Be back with another podcast after a few years. A few years, and then we'll see where we both are. So let's see. I hope whoever is going through a bad time, they come out with like more strength. I really pray. But thank you. Thank you so much for tuning into this episode. I hope that there was something that you learned from it. I hope that there was something that struck a chord in your heart. I personally learned so much, like last time, this time as well. Same goes for me. I learned a lot from you. Don't forget to like, don't forget to subscribe, and don't forget to leave a comment to let us know what you think, how you feel. Do you believe in those things that we talked about? What is your thought on that? Maybe we can learn from you guys. And please do let us know like how you guys cope up with the loss, and that is something that we also like can learn from each other. We can learn from each other. I'll see you next time. Thank you. Allah Hafiz.